Hello guys, what's up? Welcome back to another stream of Genshin Impact. Let's go, we are back. क्या हाल चाल सभी के? चलो, आज कौन सा ड्रिंक बनाना है मेरे को? कॉफी पिलाते हैं लोगों को. फर्स्ट, हे मेहनाज, वेलकम टू स्ट्रीम. व्हाट्स अप? क्या हाल चाल? कौन सी कॉफी पिलानी याद मेरे को? हम्म. मैं बढ़िया, आप बताओ. मैं भी एकदम मस्त यार. और बताओ क्या पुल किया? 1% कॉफी एंड वाटर. ठीक है. रियल लाइफ में भी ट्राई करना चाहिए ना ये. क्या बनता है देखने में. आज हम सीखेंगे कॉफी बनाना विद गेंशिन इम्पैक्ट. लेट्स गो. ओके, तेरे को चाहिए? ले भाई. मुझको नाइडा चाहिए, अभी तक मिला नहीं. अच्छा, नाइडा चाहिए क्या? क्योंकि मिल जाएगा, मिल जाएगा. टू टू टू. ओके. We don't need an umbrella. Just pick up the pace. बारिश हो रही बीच पर. ओके. यार इतनी दूर कमीशन दे दिया मेरे को. हाँ. हेलो आदित्य काले, वेलकम टू स्ट्रीम. व्हाट्सएप के हालचाल? व्हाट्सएप व्हाट्सएप. हेलो. ओके भाई, मेरी नो ईएम ओनली डीपीएस नहीं था. देख लियो प्लीज. देखता हूँ देखता हूँ. आईडी बताओ आपकी. ओके, लेट्स सी. नो ईएम ओनली डीपीएस नहीं रहा. ओके. Day, but अबे स्पेशल इवेंट आई रखी है. स्पेशल इवेंट में क्या है? आदू. एफ के नो स्किन सिलेक्टर. बात तो है यार, स्किन सिलेक्टर नहीं आया ना. शीश. ओके, so we have Nahida here. 1.5 k attack, 257 elemental mastery, 60 to 189 crit damage, और random damage bonus. Okay. R5 weight sheet level 90, 4 piece deep wood. Okay. 13% crit damage, crit rate 8%, और elemental mastery. Attack percentage, crit damage 28%, elemental mastery. Attack percentage sand, crit damage 17%, 13% crit rate. नाइस वन. ये पीस अच्छा है बे. नाइस पीस. डैंडो डैमेज बोनस पे है 14% क्रिट डैमेज, 3% क्रिट रेट प्लस एलिमेंटल मास्टरी. ओके. और क्रिट रेट सर्कुलेट पे है 11% क्रिट डैमेज और 10% एनर्जी रिचार्ज. C0910 9. नाइस. अच्छी नाइट है. पर ना अटैक पर्सन के बदले ना ये पीस अच्छा है इसलिए, वरना एलिमेंटल मास्टर भी दे सकते हो वैसे. थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा. I can't seem बट to या shake this strange feeling. अच्छी है. Let's just hope it's my imagination.
ओके। किधर है? अच्छा पानी में है। और बताओ, और क्या हालचाल? मेरी शोगन का बिल रिव्यू करोगे भैया? बिल्कुल करेंगे, बताओ आईडी बताओ। बस ऐसे ही। अच्छा अमेरिका सर्वर, ओ माय गॉड। ओके, वो वेबसाइट कौन सी थी? वेबसाइट का नाम भूल गया। एनका, यस एनका। आईडी देख के आई, ठीक है आओ। तब तक मैं कमीशन कर लेता हूँ। आजा भाई, वहां तक जाएगा। ये ना बात। ये क्या है? क्या इंस्टेंट क्लिक हुआ है ना? वाओ। भाई तो अपनी एआर बताओ भाई। 59। It's a nice day, but I can't add Astra. Thank you for add Astra. ओके यार, मेरे को लगा इवेंट आ गई रहेगी, पर आज इवेंट आई नहीं है। अभी टाइम है। 9 घंटे के बाद आएगी इवेंट। लूल हो गया। सेम बस और 1.5 लाख एक्सपी, फिर लेवल 60। ओ नाइस। मेरे मेरे में तो टाइम है, अभी बहुत टाइम है। या मैं कैरेक्टर्स दिखाओ जरा, कैरेक्टर्स क्या दिखाऊं? देखो, कुकी, नहिडा, कोकोमी, रीना। क्या दिखाओ इसमें? कौन सा कैरेक्टर दिखाओ बताओ? इलान दिखाओ, आयका दिखाऊं, अजवा दिखाऊं, राइडन शोगन दिखाऊं, बुताओ दिखाऊं, या नाविया दिखाऊं? कौन सा दिखाऊं बताओ? अरे मतलब सारे 5 स्टार। 5 स्टार ज्यादा है नहीं वैसे तो। देखो, यहाँ से नहीं दिखाते ना, माफ करें। ये लो, नाविया दिखाना। वैसे नाविया दिखाऊं, रुको। नाविया देखो, ये लो। 2.1 के अटैक है, 64, 181, 141। ये वो वाला वेपन है, और ये वाला सेट। देखो, ये वाला पीस अच्छा मिला, 33, फिर 13, ये 24 है। ये थोड़ा सा चेंज करना है मेरे को। अगर मेरे को थोड़ा सा क्रिट रेट मिल जाए ना, थोड़ा सा क्रिट डैमेज कम रहेगा फिर भी चलेगा, पर थोड़ा सा क्रिट रेट चाहिए मेरे को इसमें। फिर ये पीस देखो, 13, 10, और ये इसमें थोड़ा सा क्रिट डैमेज ज़्यादा चाहिए मेरे को। तो ये दो पीस थोड़ा से चेंजेबल लग रहे हैं। उससे उससे मतलब, उसके अलावा तो ठीक है। और ये थोड़ा सा फार्म करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मेरे पास फार्म नहीं है ये वाला। नाइस, थैंक यू थैंक यू।
अभी ना मैं थोड़ा सा वो नाहिडा थोड़ा सा बिल्ड कर रहा था। भैया बताओ, आपका आइडिया है नहीं, थोड़ा सा वो डालो ना, फुल स्टॉप या ऐसा कुछ बीच बीच में, पूरा नंबर नहीं आएगा। मेरे को ऐड कर दियो फ्रेंड्स, और नाविया भी दिखाना जरा, बताना। ओके ओके, करता हूँ, रुको। आदू भाई, दिखा दिखा मेरे को, रुको। 85368863। ये रही, नहीं आई यार, चैट में नहीं आई। नाविया 2.5 के अटैक, ओके। 62 195 100 एनर्जी रिचार्ज। 100 एनर्जी रिचार्ज ही नहीं है, शीश मैन। वुल्फ ग्रेस्टोन है, ओ नाइस। R190 लेवल, 4 पीस गोल्डन ट्रूप। 4 पीस गोल्डन ट्रूप पकड़ा है, ओके। 24 क्रिट डैमेज, 6 क्रिट रेट, 20 क्रिट डैमेज, 12 क्रिट रेट। ओ ये पीस मस्त है। 20 क्रिट डैमेज, 7 क्रिट रेट, ये भी अच्छा है। जियो डैमेज बोनस में 18% क्रिट डैमेज, और क्रिट रेट में 23% क्रिट डैमेज, नाइस। 309 10 9, गुड गुड, नाइस नाविया। The अमेरिका सर्वर अब criteria for देखो नहीं certificate आया, exams are आईडी straightforward नहीं enough. आया। What it आप really comes तीन down to तीन is नंबर whether you are डालो, willing to फिर put फुल in the स्टॉप time. डालो, फिर से 3 नंबर If you डालो, फिर study से and फुल स्टॉप practice, डालो, ऐसे then डालो, it's really not all that. ऐसे डालो, फिर आएगा। कॉपी पेस्ट करोगे तो शायद नहीं आएगा। रुको, मैं तब तक एनका खोलता हूँ। आप लोगों को दिखाना पड़ेगा ना, मेरे को थोड़ा सा ना डिस्प्ले कैप्चर चालू करना पड़ेगा। वेट व्हाट? If the Arataki gang stirs up any trouble, I'll drag every last one of them back to apologize. हाँ अभी आया, नाइस वन। रुको, मैं ना आप लोगों को कैसे दिखाऊं। हाँ अभी दिखेगा ना। Just let me know if you ever find yourself in a pinch. I can help you out. 665 611 ओके। सो राइडन शोगन हियर, 2.6 के अटैक, थोड़ी सी एलिमेंटल मास्टरी, 50 क्रिट रेट, 102 क्रिट डैमेज, और 265 एनर्जी रिचार्ज, ओके। 4 पीस एम्बलम है, ओके। 10% क्रिट रेट, 7% क्रिट डैमेज। वेदर में है 21% क्रिट डैमेज, ओके। फिर ये क्या है, अटैक परसेंटेज सैंड है ना, हाँ। अटैक परसेंटेज सैंड में है, क्रिट रेट है 5%, ओके। अटैक परसेंटेज है ये, इसमें 22% क्रिट डैमेज है, और क्रिट रेट सर्कुलेट है, इसमें थोड़ा सा क्रिट डैमेज नहीं, थोड़ा सा क्रिट डैमेज कम है, तो थोड़ा सा चेंजेबल है। आई मीन एक ये चेंजेबल है, और एक ये चेंजेबल है, ये दोनों सैंड और सर्कुलेट। बाकी तो आई थिंक ठीक है, मिलेंगे मिलेंगे, अच्छे पीसेस मिलेंगे। और एंगल फ्लिंग लाइटनिंग है, ये तो देखा ही नहीं मैंने, नाइस वन। C6 सारा है तो कोई इश्यू नहीं है, बात तो है। सारा है क्या? लो पीटी प्लीज।
पीटी की तो दिक्कत है। सारा है C3। ओके ओके। चलो आज देखते हैं मेरे को कौन से पीस मिलते हैं। शेवरस यूज कर लिया, हाँ शेवरस भी यूज कर सकते हैं। I see everything. Wow. Time to go welcome here. Yoo-hoo! Dissipate. अंकल पगला जाते पूरा। Now testing my patience. We'll meet again. अच्छा है क्या मेरा राइडन बीट? हाँ अच्छा तो है, बट थोड़े पीसीस चेंज करने, मतलब चेंजेबल है। एक आपको ना अच्छा सा एक अटैक परसेंटेज वो चाहिए, सैंड चाहिए, जिसमें अच्छा खासा थोड़ा सा क्रिट डैमेज चाहिए। मतलब क्रिट डैमेज जो है ना थोड़ा सा अगर 130 के आसपास पहुंच जाएगा ना तो मज़ा आएगा आपको यूज़ करने में। You are not welcome here. Allow me. Strike a pose. What? Oh. Let's move out. पर मिल ही नहीं रहा। हाँ, वो तो रहेगा यार। मैं बोल रहा हूँ एक एम्बलम वाली डोमेन, एक ब्लिजर्ड वाली डोमेन, और एक वो गोल्डन ट्रूप वाली डोमेन, वो 3 डोमेन ना इतनी गंदी है ना, कुछ नहीं मिलता उसमें से। वैसे ये डोमेन भी उसी लीग में जा रही है मेरे लिए, क्योंकि इसमें से भी मेरे को कुछ नहीं मिल रहा। पर हाँ वो 3 डोमेन में मैंने इतना फार्म किया ना, फिर भी मेरे को मतलब डिसेंट पीसेस ही मिलते हैं। कोई भी पीस ऐसा नहीं होता कि जो मेरे को लगे ओ माय गॉड व्हाट अ पीस मैन। Our bond is strong. Again. स्ट्रॉन्ग बॉक्स है एम्बलम डोमेन का, है ना, और उसमें से भी कुछ नहीं मिलता नहीं है। थोड़ी सी एलिमेंटल मास्टरी चाहिए मेरे को। I see You are everything. not welcome here. Strike a pose. मैं ये हर बार मारता है यार मेरे को। Out of my way. ये ले भाई अल्टा। क्रिट कोकोमी वाओ, नहीं क्रिट नहीं है वो। कोकोमी में सिर्फ पानी डालने के लिए लगा हाथ में, क्योंकि ईएम कोकोमी है ये। पता नहीं क्यों लगाई है मैंने, पर हाँ लगाई है, ऐसे ही लगाई है। कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता हूँ ना मैं टीम में, इसीलिए लगाई मैंने। ईएम कोकोमी, ये देखो 8553 ईएम है इसका। सैक्रिफिशियल फ्रैगमेंट के साथ और 4 पीस गिल्डेड। यार आज मैं सोच रहा हूँ अभी यही कर लेते नाविया का स्टोरी क्वेस्ट, क्योंकि यार इवेंट तो आई नहीं यार। मैंने सोच रहा, कल मैंने देखा था एक दिन बता रहे थे, मैंने सोचा आ जाएगी पर नहीं आई। नेवर माइंड, हम भी ट्राई करूंगा। हाँ करो, मस्त है। मैं कितने ईएम है देखो, मैंने इसको ईएम देके इसका ईएम थोड़ा सा कम कर दिया, और इसको थोड़ा सा वो क्रिट बिल्ड कर दिया, और ये भी ईएम है तो ईएम प्लस ये डैमेज देती है, और प्लस इसका ईएम प्लस इसका डैमेज। फिर ना और एक बात बताता हूँ, ये हीलर, Hold the line. ये Bond हीलर, is strong. और ऐसे करके ये हीलर, 3 हीलर है इस टीम में, देख रहे हो। ये भी मैंने क्यों लगाया ना मेरे को नहीं पता, पर हाँ ट्राई करने के लिए ऑब्वियसली। 3 हीलर है एक टीम में। चलो नाविया के स्टोरी क्वेस्ट करते हैं। नाविया का स्टोरी क्वेस्ट क्या है? Well, if it isn't my dear partners. ए नाविया, व्हाट्सएप, लॉन्ग टाइम नो सी। Navia!
मैं भी नाहिडा क्रेट बिल्ड करूंगी जब मिल जाए। नहीं क्रेट बिल्ड मत करना पर I हाइब्रिड didn't बिल्ड करना। expect to run into you guys here today. Are you headed somewhere? लाइक हाइब्रिड बिल्ड में कैसा है कि फ्लावर और फेदर में थोड़ा थोड़ा सा ईएम और क्रिट डैमेज क्रिट रेट, फिर सैंड एलिमेंटल मास्टरी उसमें क्रिट डैमेज क्रिट रेट, फिर डेंड्रो डैमेज बोनस और सर्कलेट क्रिट डैमेज या क्रिट रेट, बस ऐसे ही। अबिस के लिए अच्छा है लेकिन इस वाले अबिस के लिए नहीं। हाँ इस वाला अबिस मैंने किया नहीं अभी तक, करेंगे कल कल करेंगे शायद। हाँ जस्ट गेटिंग अ डेली डोज ऑफ एडवेंचरिंग इन। पर नाइडा एक ऐसी कैरेक्टर है ना, कैसे भी तुम लोग बिल्ड करो ना वो डैमेज देगी अच्छा ही। फुल ईएम बिल्ड करो फिर भी तुमको मतलब तकलीफ नहीं पड़ेगी, क्रिट बिल्ड करो फिर भी तकलीफ नहीं पड़ेगी, और हाइब्रिड बिल्ड करो तो भी तकलीफ नहीं पड़ेगी। मस्त फुल कैरेक्टर है। How about you, Navia? Are you still busy rebuilding Poisson? हाँ रीबिल्डिंग कैसे चल रहा है We've wrapped पोसोन up का? most of the rebuilding, but there are still a few things left इस to वाले take care में of. एक वो कैरेक्टर लगता है सेकंड फेज में। हाँ वो उड़ने वाला आया है ना, Stocking up उसके on लिए कोई बात नहीं, ये materials, लान ले जाएंगे हम confirming लोग। construction timelines, discussing compensation terms with families affected by the disaster. Between all of that, I've been making a lot of trips between the court and Poisson. इसके बदले फ्यूरिना के बदले ये लान ले लेंगे इजी। पर उसके लिए ना या तो फिर मेरे को फ्री स्टीम ले जाऊंगा तो कोकोमी उस तरफ पे भेजनी पड़ेगी, तो यहाँ पे कोकोमी के बदले ये लान ले जाऊंगा, तो फिर नाहिडा को ईएम बिल्ड कर दूंगा। करेंगे कुछ अभी ट्राई करो, मुझको देखना है, कल करेंगे। अभी ये स्टोरी को स्टार्ट कर देना तो ये कंप्लीट करते हैं। Wasn't Spinardi Rosella affected too? Should you really be able to one offering compensation? Well, though the victims have received relief payments from the court, in my opinion, as the मैं administrators ना of अभी इसमें बहुत Poisson, थकता हूँ पर Spinady Rosula should take some नहीं आज responsibility करो as अभी। well. आज यार ये स्टोरी को Our स्टार्ट कर financial दी ना। situation right मैं now एक्चुअली isn't सोच the के आया था कि आज best, वो इवेंट so करेंगे। all we've been doing is signing agreements for the damages to be repaid at a later date. अगर ये इवेंट Though just मतलब ये pieces of स्टोरी paper खत्म हो now, जाएगी ना they तो करते हैं। demonstrate our commitment. पर इवेंट They're आई नहीं आज, necessary to restore बीटी the हो people's गई। अभी faith इवेंट in कल us. आएगी तो कल इवेंट करनी पड़ेगी वैसे तो। Spoken आज like a true ये president. स्टोरी क्वेस्ट खत्म हो You're a जाएगी ना really तो करते हैं अभी responsible जल्दी। leader. That must be taking up most of your पता time, नहीं though, कितनी लंबी right? है ये इवेंट, अरे इवेंट बोल रहा हूँ स्टोरी You क्वेस्ट। bet. Between that and all the other errands I have to run at the court, I'm always forgetting one thing or another. So before I came over this time, I took a page from Melusa's book and decided to make a list of everything. This way, it's easy to see which tasks you haven't checked off. हाँ बात तो है, सब लोगों को एक दिन में डायरी रखनी चाहिए ना, मतलब डायरी में लिख देना क्या आज का कितने टास्क है और उसमें से कितने कंप्लीट किए। एंड देन And then, since Malus loved using shorthand, I decided to also follow his example and come up with some shorthand of my own. But after running a few errands in the city, I'm kind of struggling to even read my own handwriting anymore. ले भाई इतनी गंदी हैंडराइटिंग है That क्या? does sound like you, all right. So, what kind of shorthand did you use? Oh, wanna take a look? Let Paimon see. Wait. There's nothing here but a bunch of weird symbols. This looks like a piece of kelp wrapped around a stick. And this other one, is it supposed to be a boar in a box? The first one has to do with confirming the final payment amount for the fishermen, while the second one is a reminder Symbols to से try the लिख के new फिर तक burger कैसे that just hit the मतलब market. अपनी हैंडराइटिंग पढ़ पाएगी? Okay, Paimon can definitely see how you might forget what each of these mean. बात तो है। Maybe just use standardized shorthand symbols next time. Maybe just write out each item next time. हाँ राइट भी तो कर सकते हैं, सिंबल से लिखना जरूरी है क्या? Thank you for your advice. These are the kinds of things you only really figure out once you've tried them out yourself. I thought that as long as I understood my shorthand when I came up with it, I'd be sure to remember the symbols when I looked at them later. Unfortunately, I've definitely proven myself wrong. Well, now you know for next time. Anyway, I should have already taken care of most of the things on the list. There are still a few symbols that I can't decipher, but I don't think they're anything too super important. Worst comes to worst, I'll just make another trip. So you're going to head Okay. back now? इसके साथ जाएंगे क्या हम भी? वैसे जा सकते हैं। That's the plan. Oh,
Actually, since we talked about the reconstruction earlier, wanna come with me and check out the town for yourself? You said you don't have any plans, right? So we can just catch a boat and head over. It won't take long at all. It's a bit sudden, but Paimon doesn't see why not. What do you think, Traveler? I'd be interested in taking a look. It would be a pretty nice break too. Then नहीं, let's go. ऐसे नहीं बोलते. We'll take a boat over. फिर वो समझेगी Oh, कि इसको you ब्रेक mean लेना है the इसलिए मेरे Aquabus, साथ आ रही right? है. Like the Clementine line? Oh, sorry. I meant our own boat. The Aquabus doesn't have a station near Poisson, so we'll use one of the Spina's boats. Sure, sounds good to me. I've still got something to do, so why don't you head over there first? नहीं, इसके साथ ही Alright, follow जाएंगे. me. I'll take you there. सब काम खत्म करके आया हूँ मैं यहाँ पे तो रिक्वेस्ट करने. तो हाँ, साथ में जाएंगे भाई. The engineer is still doing a few routine safety checks. We can head out as soon as we get the green light. So, Paimon has always wanted to ask. The 3 Aquabus lines are all named after people in your family, right? Oh, Yeah, that's ऐसा है right. क्या? Callus and Navia are self-explanatory, while Clementine was the name that my mother went by. Oh, Finati Ruzula was one of the main sponsors for the construction, right? If you provided the Mora to build the lines, then why isn't there even a dedicated line to Poisson? Spina di Rosula built all the lines, yet you still have to take a special boat just to go home. हम तो सीधा टीपी मारते भाई. Well, what I heard is that most of our businesses don't actually use Poisson as a hub, so there was no real reason to build a line straight to Poisson. You are right that it is a bit strange, though. If you've already committed to build 3 lines, why not just add a 4th? Yeah, that's what Paimon's saying. The Aquabus is so convenient, it's really a huge shame. Well, Hmm. it is what it is. You know what my father was like. Even I often struggled to figure out what was going on in his head. Well, something that big also wouldn't have been just his call. Perhaps the rest of the Spina didn't see a point to having a 4th line. But that would only be the case if he cared about what others thought. My father was always really stubborn. Once he made up his mind, good luck getting him to change it. From what I've heard, the rights of all the other members of the Spina only went as far as giving him advice or suggestions, and no farther. That included my mother, too. Huh. Well, that explains why you weren't on the greatest of terms with him. Yeah, because I wouldn't just let him keep getting his way. He was just... not very agreeable. Boss, the boat's ready. We can head out. All right, then let's head out. Rosa Multiflora Chapter Act 1. It'll be a while before we get to Poisson. Let's keep talking. वाह. Navia, what was your mother like as a person? Oh, Paimon, sorry. She totally forgot that you mentioned before that she passed away during childbirth, so you probably don't remember her at all. That's all right. I've heard many stories about her from the rest of the Spina. They've always said that they were sure we would have gotten along famously. While my papa was stiff like a board, my mother was supposedly super cheerful and funny. Their complementary personalities allowed them to make up for each other's flaws. My father would run the businesses and expand our reach, while my mother would keep the peace and make sure that everyone was happy. Their work made sure that the Spina could grow and thrive. Sounds like they were not just a well-matched couple, but fantastic business partners as well. Yeah, but those are just stories and anecdotes after all. It's hard for me to piece together a more complete or intimate picture of her. But sometimes, I'd still look at the Clementine line and wonder, would the Spina and Poisson still be what they are today had my mother survived? Silver once said that a name is a kind of inscription, a way to etch a memory into the world. When given a name, a cold, inanimate object can gain a completely new meaning. So,
I will always associate the line with her in my heart. Over the past few weeks, I've also begun to appreciate how water can take in and hold our most intense feelings and memories, as well as how one may reflect on their past by watching the sea. I've lost many beloved people and memories to the sea. Even though I cannot stop for them and must continue to keep moving, the fact won't change that they existed in my life and gave me the reason and motivation to move forward. Do you miss them? Missing Melus and Silver? Always. Obviously. But no matter what, we can't change the past. But I tell myself that I need to keep looking towards the future. Everyone, even my parents, have already overcome so many obstacles. Besides, I'm the president of Spina di Rosula. I've got to keep my chin up. We've reached the shore. Let's go. I'll show you the new poisson. Navia, do you think she's doing alright? She seems to be managing. She's always been having to cope with one thing or another. Okay, Paimon supposes you're right. She's really been through a lot. It couldn't have been easy shouldering so much by herself. Enter the Poisson. Boss, you're back! क्या हो गया भाई? Traveler and Paimon, welcome back to Poisson. Oh, hey! Fancy seeing you again, Florent. Is it your turn to take care of Navia now? Hey, I can totally take care of myself. For the time being, I'll go around without any attendance. We did hand over some of Melus's old responsibilities to Florent, though. It's been really nice to have him around to help out. Thank you for the compliment, boss. As you see, I've been working closely with the boss on rebuilding Poisson. Mr. Melus was an extremely capable and respected member of the Spina. I've got some really big shoes to fill. All right. There's no need to be so formal. Everyone's practically old friends by now. Were you waiting here for me? Did we manage to make any progress on the statue? Yeah, we contacted a sculptor about the job, but they can't get started on sourcing a correctly sized block without knowing the design that we want to use first. You're commissioning a statue? So basically, we've been meaning to commission a statue of my parents in commemoration of everything they've done for the Spina and the town of Poisson. But since my father was known as callously unfaithful for the longest time, it would have been too controversial to commission a statue of him. But now that his name has been cleared, and the town is also being rebuilt, I thought this would be the perfect chance to actually realize this dream. The funds to build the statue were freely donated by the people of Poisson to show their appreciation for Miss Clementine and Mr. Callus and everything they did. Shouldn't Navia be featured with them too? Me? I'm just the newbie president that's running around and causing everyone trouble. Maybe we can have this conversation again in a few decades, once I've done more for the town and the people. बात है, बात है. Hey, there's no need to be so humble. Didn't you just help save the entire country? I agree wholeheartedly. I also believe that Boss should have a place on the statue. Hey, if you keep inflating my ego like this, I might just float off into the sky with my parasol. Just kidding. There's no way that I'd accept that kind of compliment at face value. At a minimum, I'd have to match what my father did for the people. Well, if that's what you think, I think it will just be a matter of time. Thanks for the vote of confidence. I
I just don't think I'm ready yet. Anyway, Florent, now it's up to us to confirm the final design, right? Mm-hmm. We can ask the sculptor to start looking for a good block once we've decided on the poses for Miss Clementine and Mr. Callis. पोज But we हाँ वो haven't भी had तो any real डिसाइड करना पड़ेगा. discussions yet on the possible designs. I feel like I should get a few promising designs first, and then send them over to you to review. There's no need for all that. Let's decide on a design right now. Hey, you! Come over here with me. हम दोनों पोज करेंगे. अम्मी व्हाट आर यू डूइंग? हाँ मेरे से पोज करवाएगी ये पक्की बात है. Modeling a few poses, of course. Here, just pretend to be Callus, and I'll be Clementine. ले भाई मेरे को क्लाइमेट बना कैलस बना दिया. Didn't you say on the boat that Callus and Clementine sounded like great partners? Well, then there's no one better to fill this role than my most valuable partner. Florent, let's grab some reference shots. You've got it, boss. I'll go get the camera. Well, what do you think? Got any ideas? Shouldn't you be running this show? Well, I've actually discussed it a bit with Florent before, but I could never come up with any fresh or original ideas. It's probably because my idea of them is already kind of set in stone. So, I want to pick your brain for a bit and see if you can come up with some new and interesting ideas. I'm all good here, boss. Feel free to start posing whenever. Okay then, let's try for something imposing. Okay, looking out into the distance. नहीं. Why don't we just strike a happy pose? हाँ ये A बात है. happy pose? You mean something like we were laughing together at a funny joke? ऐसे नहीं ना 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 ये मजा नहीं आया यार. Would all that be able to come through with just a picture? Would we even be able to tell what they are supposed to be laughing about? Yeah, and that'd probably be a massive pain to sculpt as well. Could one of you try striking a pose like you're talking while the other one laughs? उल्टा करा यार. That actually sounds pretty hard to pull off. Forget it, let's try something else. Imposing? Imposing, huh? Oh, I've got it. Let's try this. ये हुई ना बात. Pose! It makes me recall Sphina di Rosula's glorious golden age. But isn't Clementine's pose a bit too bold and heroic? Was she really that kind of person? If we were to stick with this pose, maybe people would wonder if she was actually the real boss behind the scenes. Well, tabloids did indeed speculate as much back in the day, but the Sphina pulled a few strings and made both the report and the journalist disappear. Oh, Paimon was just kidding! Please don't make Paimon disappear. What Florent meant was that we asked the journalist to choose a new alias. You're right, though, that this may not accurately represent the image of her in our hearts. Let's try to come up with something else. ये लो फिर तो एक ही बच्चा यार. Looking out into the distance. By that, do you mean as if we were standing on a boat and looking out at the sea? Sure, let's give that a try. Whoa, you really remind Paimon of a captain and their first mate. यार ये पोज मेरे को नहीं पसंद आया. There, my dear Clementine. As you can see, every tree on that island is dripping with mora fruit. But there's something off with the composition. This pose makes Mr. Callis look too tall next to the lady. Oh, I see what you mean. Then let's swap. Well, Paimon is a fan. A statue like this would look fantastic on a boat. Wait, but we can't do that. Very few people would see the statue if we were to put it on a boat. This statue is meant to be placed in the town. But then, since we're putting it in the town, the whole point of the pose would be lost. Oh, okay. We'll try to think of something else. अभी सब खत्म हो गया भाई मेरे पास. ये हुई ना बात. नहीं पोज डिसाइड करने में पूरा दिन चला जाएगा मेरे को लग रहा है. 2 दिन लगातार स्ट्रीम. ओ माय गॉड. हे आइस वेलकम टू स्ट्रीम. क्या हाल चाल? Paimon's
We still got a lot of reference shots out of the session, and each of them can be considered to be a souvenir in their own right. Let's just keep the ideas we tried as backups. Man, if I knew I was going to do a photo shoot with the Traveler, I would have prepared a lot of outfits and props ahead of time. ये लो भाई. Oh, outfits! Ugh, साढ़े क्या that's गेम the गया errand कल I का. हाँ forgot यार back in बात the तो है. city. Do either of you still remember that girl? The girl I went to see with you two. Her name is Adele. Oh, Paimon remembers her. She was the one that we met while investigating Mr. Callus's case, right? She always believed that her father Jax was a good person. Yes, that's exactly who I'm talking about. Heavy So, shit हो गया ना after the कल case, तो. she was finally willing to talk to me. जय And सुबह she की told me बेइज्जती that तो she हुई wanted to है. join the Spina too. I कल के said that सभी it's गेम fine, ऐसे ही गए but पता है. young उसके बाद भी children हम are not 2 गेम allowed to खेले वो join भी the सेम Spina. गए. She will just have to wait a few years, and then we'll welcome her with 5 मैन में open थोड़ी arms. दिक्कत तो रहती है. Since she's सामने still a वाले बहुत child, ट्रायहार्ड though, करते she हैं. thought I was just trying to let her down gently. But how और हम could I लोग get मस्ती her में to खेलते हैं ना वो believe भी that बात है. I meant what I said? In the end, I came up with an idea. I'd have a Spina uniform made and give it to her as a gift. But I got so busy and distracted in the city that I forgot to pick the uniform up. So I did forget something important after all. हाँ वो Don't worry, boss. रह गया I भाई. can send someone to pick it up right away. On the matter of the statue, we should still come up with a few more ideas for the design. I'll have to trouble you to source some for me. We could have just done that from the start. Hey, at least this way we got some cool pictures. बात तो है यार. Yeah, you're right. They'll have some value as souvenirs at least. ऐसे ही क्यों भागते हैं लोग गेम में. थोड़ी एनिमेशन चेंज करो. गेंशिन वालों को बोलो यार भागने की एनिमेशन चेंज कर. Navia! Florent, guess who's back? कॉल्टर. Huh? But aren't you supposed to... Oh, well, if it isn't Coulter. Back already from the Fortress of Meripede? फोर्ट्रेस ऑफ मेरापिट That's से वापस आ right. गया. वक्त है I क्या किया था finally भाई इसने finished ऐसा तो. serving my time. Gotta say, turns out I was a lot tougher than I thought. After I got out, I immediately made a beeline back to Poisson. You could say that familiar, briny smell became a primal call, urging me to forget everything else and just come back home. You wouldn't believe how much I've missed Melissa's grilled fish. I dreamed about it every time I had to get a welfare meal. इसको तो down पता ही there नहीं होगा ना beneath the मिलुस sea. का और क्या It's सीन. good to have you back, Coulter. You look as well as ever. क्या पता रहेगा. And this guy is... Ah, let me introduce you. This is Coulter, another of Spina di Rosula's members. He was found guilty and sentenced to the Fortress of Meripede some time ago. क्या किया था भाई. But, looking at it now, it was probably another one of Marcel's plots while he worked at the Confrérie of Cabrières. Wait, Mr. Marcel. What do you mean? He was involved in some sort of plot? Have you not heard anything at all about the Okay. water from the primordial sea उसमें case? गया था ये अंदर. Well, I know that Fontaine got flooded, but then the water levels miraculously receded. I thought that was all there was to it, and didn't care to ask for any more details. Do you mean Mr. Marcel was somehow involved with all that? Oh, looks like we'll have to explain everything from the top. That case, a lot of things have happened in Poisson since then. First things first, let me introduce you to these two. They're my most trusted partners, and they've been with me through thick and thin. Now you could call them Spina di Rosula's VIP helpers. VIP helper. Oh, nice to meet you. I don't recall Navia ever generously सब लोगों की complimenting हेल्प anyone करता like हूँ मैं. that. मेरी हेल्प कौन करेगा So you must भाई. be pretty मेरा amazing भाई to मेरे get को that कब from मिलेगा. her. Yeah, we are indeed pretty amazing. But we've been cool since before we even met her. We just followed Navia's lead. All credit to Poimon. नहीं ये नहीं बोलूँगा. Humble again as always, I see. Even when I was totally sincere with my praise. Nice. Spina di Rosula always seems to attract great people. Oh, that reminds me. Where are Malus and Silver? यार Aren't दुखती they रस always पे by your नस पे side? हाथ रख दिया. ऐसे बोलते ना. हाँ. About that, शीश मैन. Coulter, a lot of things happened while you were gone. As you can see, even Poisson isn't quite the same as how it was before you left. they lost their lives, keeping me safe during the flood. PTSD आया इसको. What did you say?
PTSD This आया है isn't some इसको. kind of morbid welcome home prank, right? You're just scaring me भाई on मान purpose ले because भाई I मान don't ले. know anything about what's happened. यार कितनी मेहनत से तो I'm नाविया का sorry, मूड ठीक किया था हमने it's the यार. truth. फिर से They गंदा हो weren't गया the only मूड. people we lost either. Many others, including Melissa, also lost their lives in the disaster. Luce and Melissa, dead. They're just gone? Yeah. Luce. I was planning to give him a surprise gift once I ran into him again in town. I can't believe it. Hey, keep it together. Malus and Coulter were friends for many years, and even served on many missions together during the early days of the Spina. I can understand how he feels. Oh, let's sit down somewhere, so I can tell you everything that has happened while you were gone. Fair warning, there was a lot. हाँ. I... बहुत कुछ हुआ है. Okay. टॉक टू कॉल्टर. मेरे को पर ये स्टोरी क्वेस्ट का सीन समझ में नहीं आ रहा है. किसके ऊपर बेस्ड है? स्टैचू के ऊपर? नाविया के मॉम के ऊपर? या सिल्वर और मलूस के ऊपर? या कॉल्टर के ऊपर? ऑब्वियसली वो जानने के लिए तो स्टोरी क्वेस्ट करना पड़ेगा, पर या Navia explains everything that has happened recently to Coulter. All of this. It's unbelievable. I can't believe that those stories were real. It all really happened. Has the world gone mad? Had I not personally experienced all those events, I would also have found them very difficult to accept. I think you and I both feel the same way about the profound tragedy of Melusa's loss. And the sheer Silver की depravity तो इज्जत ही नहीं of है मेरे को लग रहा है. Marcel's actions. I thought Mr. Marcel would always stand by the Spina. Everything he had, the Spina gave to him. It's unconscionable to have received all that, and yet still plot to kidnap and dissolve you for his insane research. The good news is that the Confrérie of Cabriere is no more. Gone with them too is the entire synth manufacturing and distribution network. We finally closed the curtain on that long struggle. Are you sure? But if Marcel wanted to rebel against us, he probably sent word in secret to Romeu. Romu? Rombo. Not a name I've heard before either. Florent should remember him. You see, there was once a major internal dispute regarding funding the construction of the aquabus lines. Oh, अभी आ रहा है Romeu story was the line leader of पे. the faction that thought such a vast sum of mora would be better spent improving the town of Poisson. But Mr. Callis believed that an opportunity to collaborate with the court of Fontaine and the Fontaine Research Institute was hard to come by, and would allow us to build many valuable relationships. Not only would the aquabus be a good business investment, it would also boost our reputation among the general populace, eventually paying us massive dividends down the line. But the two couldn't come to an agreement. Romeu ended up taking a lot of people with him when he left Spino di Rosula altogether, and the split was on extremely bad terms. Ugh. And with Papa's stubbornness, I can definitely imagine how it must have gone down. And of course, when he was suffering the slings and arrows of outrageous injustice, those relationships that he spent a fortune to build didn't help in the least. Yeah, you could say it was the price he paid for sticking to his beliefs. That couldn't have been the first time a dispute like that happened, right? Oh, that's a good point. If Callus was really as stubborn as you say, then wouldn't he have argued with the rank and file all the time? Oh yeah, it eventually became a thing that just happened on every day that ended with Y.
But Navia, I mean, boss, you might not know this, but he wasn't always like that. He used to be a lot better with taking counsel. With him listening to our advice, and Ms. Clementine also frequently on our side, it was pretty smooth sailing for a good many years. But क्लेमेंटाइन के on the होते matter हुए of सब the कुछ ठीक जा रहा Aquabus, था आई थिंक. even Ms. Clementine completely stood by Mr. Callus's side. Huh. I never knew. But from my perspective, Romeo's position had a lot going for it. Couldn't they have sat down and talked it out? I think the Aquabus was just the straw that broke the camel's back. On that topic, they eventually came to a rather radical conclusion. They believed that Miss Clementine lost her ability to serve as an impartial mediator when she became pregnant with Callus's child. So, they thought she had betrayed them? But that doesn't make any sense. Before she was their mediator, my mother was also her own person, and a member of the Spina. She should have the right to take any side she wished. Yeah, but to them, even taking a side was betrayal enough. They felt like their voices could no longer be heard once their sole mediator had gone over to the other side. Of course, Ms. Clementine then passed away, and Mr. Callus began to regard the completion of the Aquabus project as her final wish. With that, the last hope of reconciliation was gone. So that's what happened. From that point on, Romeo and his people cut ties with the Spina, and never gave us any kind of professional or personal courtesy ever again. Perhaps they've regarded us as enemies ever since they left. But even so, there is still no proof that they ever acted in concert with Marcel. I've also heard that they aren't in a good financial position, so they've been lying low for a while. But as long as they exist, they'll continue to be a threat. Huh. I think Coulter's got a point. Both Marcel and Romeo had my father in their sights for a very long time. Even though Marcel's faction has been dissolved, we still don't know anything about Romeo's whereabouts. If they're still trying to get revenge on us, with how distracted and vulnerable we are, now would be the best time. Good thinking, boss. We should keep an eye on them at all times. I'll let my men know right away. Thank you for that, ऑल्टर Florent. भाई ने आके तो बूम And बाम कर दिया Coulter. बे. Thank you for telling me about this as well. Don't worry, it's nothing. Do you have a moment right now? How about we go out for a walk? I've heard so many incredulous things today. I'm finding it a bit hard to calm down even now. I mean, to think that I'll just never see them again. Ah, in that case, why don't we go back to the court? I can pick up Adele's uniform while we're there as well. It'll save Laurent's guys a trip. Want to come with me again, you two? You don't mind, do you, Coulter? Of course. That's fine by me. Then let's go! Paimon feels like a lot's hinging on this visit. We want to see adults cheer up. We want to see the future star of this Spina. We really are the best of partners. Come on, let's go. Are we not taking the boat this time? साढ़े अबिस कर It's बे. nice to walk from time to ये time, isn't it? ये कंप्लीट कर दूं ना, Something उसके बाद like टाइम रहा तो a करता हूँ. hiking trip. Once we're there, we can stay a few days before we return. Sounds good. I haven't walked this road in a long time. अबे पूरा चला के ले जाएंगे क्या मेरे को? आज स्किल दिखा दे अपना, मत करो यार. मेरे को आदत नहीं है ना यार इतना सारा अबिस करने की, तभी यार.
साल में एक दो बार अभी करता हूँ मैं. Well, we've walked far enough for now. Let's take a break. ये भाई इतनी देर में तो Since थक we're गए ये out for a लोग. walk, we shouldn't stress too much about the destination. I've grown old, so I'm not as fit as before. It's a good thing that at least my work down in the fortress was quite the workout. Well, Paimon thinks you're doing great. We didn't have to slow down for you at all. Back in the days before the aquabus lines were built, we often had to hike north with our goods, then catch a boat to the court. आज पांच स्टैक खेलना था, पूरे 3 मैच डोमिनेशन किया है ओडिन से. वाह. Malus and I must have traveled Sabas. this way hundreds of times. When we were tired, we would lay down for a while on the grass, and when we were hungry, we'd catch a fish or two. The Spina was still on the rise back then. ओडिन गेमिंग. Mr. Callus was generous, and everyone had the chance to strike it rich. So, of course, we all worked really hard. And now, in the blink of an eye, the aquabus lines have been built, and this road has fallen into disuse. I don't really think that's a bad thing though. Oh, I know. I was just being a little nostalgic. Then let's stay here a bit longer. Anyone want snacks? इधर लेके घूम रही है There's स्नैक. another chance to try some of Navia's macarons. Paimon's been dreaming of them. ले भाई ना, पॉइमन ना मस्का लगाने में सबसे नंबर 1 है भाई. मेरे गांव में सब ओडिन किंग बोलते हैं. 5 ओडिन एंट्री ही नहीं हो रहा. Yep, I figured you wouldn't say no to a few more. Oh, wait. Let me check if I have all the ingredients. Malus and Silver used to take care of tasks like this. यार फिर से मलूस और सिल्वर की याद आ गई इसको. Okay, the stove's looking good. And as for the ingredients, seems like we're all out of flour and sugar. The 2 most important ingredients of all. Should I go get some? Oh, would you? Oh, but it would be too much to ask you to go on a trip just for those. We should contribute to making the macaron too. Don't worry, we cook out in the wild all the time. वैसे so बना you हमारे should लिए have रही some तो हम stuff भी on hand. कंट्रीब्यूट तो करेंगे ना यार. Oh, that's great. Then I'll leave the ingredient gathering to you. As long as एक we मैच have तो some लोटस sweet में था. वॉल flowers बैंक and भी wheat, वॉल बैंक. I can लोटस यार start the पूरा baking. लोटस और असेंट पूरा Then I'll go पेपर look से for बना है some बे. boxes nearby ऑलमोस्ट for हर the वॉल makeshift बैंकेबल. table and chairs. Great. Then I'll prep the stove. Let's get to work, everyone. ओके. ये सब तो मेरे पास रहता ही है ना. हाँ दे दो इसको. How did it... इजी. एक देना था इसको. छी भाई. You've all done your part. Just leave the rest to me. Whoa, these macarons look and taste magnificent. अबे ये टेबल कहाँ से आ गया अभी यहाँ पे? Cooking is as good as ever, Navia. Boss's baking skills have always been famous. Everyone in the Spina knows how exceptionally talented she is. Oh, it's just a hobby. There's no need to praise me for it like that. Have you two seriously never considered joining us? You're so close to the boss, and she obviously trusts you with all her heart, so... There are still some important things we must do. हाँ ना यार. नवरा थोड़ी ना हूँ मैं यहाँ पे यार. मेरे को एक बहुत बड़ा टास्क करना है यार. You really wanna poach me from the Adventures Guild, huh? Yeah, I ऐसे see. नहीं बोलता. Is that why you have to always stay on the road? You just happened to walk in on our little reunion. It's actually been quite a while since we last spent time together. Adventurers never stay in one place for नजर long. ना लगा तू The हमारी name दोस्ती of को. Spina di Rosula would just tie them down. Besides, after everything we've been through together, I'm sure our hearts would remain intertwined even if क्या we मैं found 22 ourselves on एडवेंचर opposite लेवल sides पर of the वाइब्रेंट world. हैरियर इवेंट खेल सकता हूँ? ये कौन सी इवेंट है बे? रौनक भाई वेलकम टू स्ट्रीम. व्हाट्सएप क्या हालचाल? Now yes, right. That's certainly one way to putting it. Yeah. Even if Paimon was far beyond the horizon, she'd still remember the delicious taste of Navia's macaron. I understand now. Then I am very lucky indeed to have been graced with the chance to meet the two of you. I will endeavor to make the most of this short yet fortuitous encounter,
and enjoy every moment we spend together. We've got no wine with us, but let's still toast with water in celebration of this moment. Why don't you play more Pokemon games? कार्तिक मेहता, वेलकम टू स्ट्रीम। व्हाट्सएप, क्या हालचाल यार? Pokemon गेम्स में डालता तो हूँ यार एपिसोड, ऐसी बात तो नहीं है। ये क्या बोल रही है? I thought I heard something just now. Was it just some small critter? नहीं यार, कोई तो हमारा पीछा कर रहा है, पक्की बात है। Cheers! Hey, what are you doing? Quick, join in on the toast! May your travels go smoothly, may the Spina continue to grow, and may our friendship last until the end of time. All set? Let's move out then. I asked some old acquaintances in town to make Adele's uniform, so we should be able to pick it up right away. अच्छा ये नई वाली, अच्छा ये है ना, ये पता नहीं खेल सकते क्या? गाइडलाइन में क्या लिखा? हाँ खेल सकते ना, रैंक 20 के लेवल के ऊपर खेल सकते हो इजी। हाँ रौनक भाई खेल सकते हो आप, आपका बस वो खुला होना चाहिए पर लिवे। Hey there, Ludovine. How's business lately? The Demoiselle of Spina de Rosula. I must say, your generous patronage is the one thing keeping me from going bankrupt. Nonsense. We all know what a talented businesswoman you are. No, and don't forget, she's the boss now. My mistake, my mistake. I just got so used to calling her Demoiselle. Are you here for the uniform? Yep. I forgot to drop by earlier when I was running errands around here. I didn't expect Demoiselle to come and pick it up in person. It's just a uniform after all. Any of your folks could have come instead. Navia's always liked to take even small things seriously. Hey, that's not the only reason I'm here. We mostly just needed a walk to clear our heads. There are few things more uplifting than taking the first step on a new journey. Boss has got a point. Going on a trip with friends is always better than staying cooped up at home. Very well. Please, wait here while I retrieve the uniform for you. लाओ यूनिफॉर्म लाओ। यार पर वो पीछे जो आवाज आई थी वो किसकी थी? कुछ तो सीन है। Paimon again why Adele wants to join the Spina? She hasn't given me any concrete reasons. All she says is that she really looks up to me. After we cleared her father's name, she became a lot more cheerful and outgoing. It's probably because she now knows for sure that her father was never a bad person. She said she used to be terrified of Papa. भाई कोई तो पीछा कर रहा है यार हमारा। She found all the rest of the Spina super scary as well. But the Spina is very different now. She mustered up the courage to talk to me, and felt like I could really understand her. The two of you have contended with similar circumstances. Yeah, Yes, बात you तो could है। say that. By uncovering the truth about the case, I was able Us to moment give हो रहा her है उसके closure साथ। at the same time. She said that she wanted to become someone like me. Someone who could lend a hand to others, instead of standing still and waiting for others to help her. From the sound of it, she'll be a wonderful addition to the Spina. I think so too. But for now, let's focus on giving her a great atmosphere to grow and thrive. She can commit to us once she's older, and can really make that decision for herself. भाई ये बंदा कौन था? So I wasn't just hearing things. Yes, देख लिया क्या इसने? Is something up, traveler? देख लिया क्या? Follow me. Someone's tailing us. Huh? Tailing? Oh, Paimon's coming. I'll go check it out too. Coulter, please hold on to this for me. All right.
कौन था कौन था Paimon saw them रसोड़े too. में कौन They था ended up. आई मीन हमारे पीछे कौन था Stop right there! ए 3 लोग भाग रहे हैं तो वेट व्हाट मेरे से फास्ट नहीं भाग पाओगे तुम लोग आ रहा हूँ पकड़े 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 है और 20 के साथ एक स्टोरी क्वेस्ट है वो क्या है आए We knew you were going to be कौन सी difficult. स्टोरी क्वेस्ट Seems like if we want them to talk, we're gonna need to teach them a lesson first. शिन्युन वाली Brothers, there's no need जो to भी new skulk in character the आई dark वो? anymore. Let's take them out. ये लो भाई ये लोग मेरे से लड़ेंगे यार इतने बड़े हो गए तुम लोग नाविया दी है 2.6 के अटैक वाली हाँ वो पता नहीं वो आपको देखना पड़ेगा यार आई थिंक Oh, वो नहीं होगी ना क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा फाउंटेन का चीजें चाहिए आई थिंक सो पता नहीं हाँ वो देखना पड़ेगा आपको ये न्यू वाली इवेंट हो जाएगी आपसे 79 क्रिट रेट 130 क्रिट डैमेज 135 एनर्जी रिचार्ज वर्डिक दे दिया 4 पीस नॉबलेस दे दिया C3 और 8 11 8 ओके पगला जाते भी बंदे Shower me with... Watch out! कौन है ये लोग now talk. Who are you? And why were you tailing us? मार्टिनेट नाम है Don't इसका think we'll let you off easy if you keep silent. recognize your situation and don't entertain any fantasies of escape भाई फुल धमकियां दे रही ट्रैवलर तो we have got people up above and down below as well How did it go, boss? Are any of you hurt? नहीं If you thought they stood any chance against us, you were sorely mistaken. Anyway, stop playing tough Piece of and cake था ये start तो talking. There won't be any room for negotiation once the Maison Gardiennage gets involved. We're looking to get vengeance on Spina di Rosula. We were discovered and can't beat you in a fight. We admit it. We lost. Get revenge? Wait, you're not Romeu's followers, are you? I think they are You actually know that name? But if you do, then surely you should understand why we hate you so much. शिनियन का स्टोरी क्वेस्ट पूरा करना है क्या इवेंट के लिए अगर आप करोगे ना तो आपको समझ में आएगा सब कुछ क्या चल रहा है तो आई थिंक करना चाहिए I would advise you to calm down. Indeed. You haven't got the faintest hope of winning right now. We were out drinking when we saw Navia. We got so angry we decided to follow you guys and look for an opportunity to really mess up your day. Too bad you guys messed up ours first. You are lying. Huh? You followed us all the way here. There is more to this. You're pretty sharp. But so what? We didn't do anything. फ्री And कैरेक्टर now it's pretty चाहिए हाँ obvious that we can't do anything to you anyway. मिल जाएगा ना वो तो इवेंट के साथ ही That just really ticked us off. And we let the drink go to our heads. Listen, Callus is long dead. No matter what कौन happened है in the बे past, I want to be able to start things anew. I am the current president of Spina di Rosula. If your boss wants to talk with me, I'd be happy to meet with him. I won't press charges for your attack. That should also help demonstrate my sincerity. I understand. Thank you. I'll let our boss know. But if you so much as think about pulling something like this again, I won't be so lenient next time. Understood? हाँ ये All right. पहले प्यार से समझाया फिर धमकी भी दी Come on, let's go. ये हुई ना बात Are you sure it's okay to just let them go like that, Navia? I don't want to inherit my father's grudges, too. Moreover, when it comes to the Aquabus, I don't think what my father did was entirely correct either. If the other side is willing to talk, I'm happy to open the door for a reconciliation.
Opportunities for new beginnings are all around us. I support Boss's decision as well. The concept of an eye for an eye is a primitive practice that has no place in today's Spina di Rosula. Yes. Plus, we already know that they're strapped for cash. If their financial situation is that dire, they don't have what it takes to challenge us. So this may be the best time to talk. I still think we should keep an eye out for Romeo's folks, though. If he decides to ignore the warning I gave his men, then we could still have a fight on our hands. Yeah, those guys definitely didn't look like big fans of yours. I'd rather things not go that far, since, though we haven't talked to each other for years, once upon a time we were all a part of the Spina di Rosula family. Yep, that's how I feel as well. Anyway, now that we've sent them packing, we don't have to worry about those guys anymore. It's getting late already. So why don't we stay the night in the Fleuve Cendre? We can head back to Poisson tomorrow. एडवेंचर ले 22 से 26 करने में कितना टाइम लगेगा एज अ फ्रीकिंग अल्ट्रा प्रो मैक्स नूब? नहीं, टाइम का तो ऐसा कुछ सीन नहीं है. मतलब जैसे जैसे आप आर्कॉन क्वेस्ट करोगे और दूसरी क्वेस्ट करोगे, वो क्या बोलते हैं, डेली कमीशंस करोगे, इवेंट्स करोगे, ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा. उसमें ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, समझ रहे हो? और शुरुआत में एडवेंचर रेस जल्दी जल्दी बढ़ता है. 40 आई थिंक 45 तक तो बहुत जल्दी बढ़ता है, उसके बाद टाइम लगता है. I'll also ask someone to write Florent a letter and inform him of everything that happened here today, so he can increase security around Poisson and be on guard against any suspicious individuals. Do we have to stay in the Fleuve Cendre again? Even the pillows there smell like seaweed. Sorry, that's just what happens when you live near water and don't get much sunlight. Poisson's pretty much the same though, so I've long since gotten used क्या to it. 5 दिन में हो जाएगा? We हाँ, हो can still जाएगा go आई out in थिंक. the evening for some grilled fish and drinks, so. Bet you there'll be people singing sea shanties too. पर आपको थोड़ा सा स्पीड does रन that करना sound? पड़ेगा. Huh. That does sound pretty cool. Okay, Paimon's on board now. Let's go. Paimon wants to sing too. वैसे तुम कितने ईयर से खेल रहे हो? आई थिंक 2. Coming back here really does feel like this place is starting to grow on Paimon. If you think about it, it would be kind of weird if the Spina's base at the court was some super luxurious building like the Palais Marmonia. Totally. Right on the money, Paimon. Although, of course, with the continued growth of the Spina, Papa wanted Poisson to eventually grow into a metropolis, not unlike the court. He was a very ambitious man, who rarely looked behind or beneath him. For better or worse, that always made him stand out from the crowd. And अब that's तो पिक also के why लिए people कौन सा hated कैरेक्टर him अच्छा just होगा? as much as किसमें they loved him. ये इवेंट है इसमें Alright. क्या? Why don't you go इवेंट wait for में me से in the आप वो restaurant? I'll शेंगलिंग go या do some सिंगचो prep, दोनों and में I'll से get एक ले someone लो. to tidy up your room while I'm at it. You can use the same room as last time. You still remember the room number, yeah? Yep. Kinda hard to forget when there are only so और many अगर rooms here after all. बैनर्स की बात करें तो उसमें तो Did I ये just hear नाहिडा. someone taking a dig at Fleuve Cendre? I'll tell my guys to stuff your pillows full of actual seaweed right now. Oh, Paimon, sorry! Please have mercy, Navia. If you do that, then Paimon really won't be able to sleep at all. I was just kidding. Be on your way now. हाइड्रो अच्छा होगा. हाँ, सिंगचो अच्छा है. ये वाला देखो, ये मैंने भी यही लिया है. ये देखो, वन ऑफ द बेस्ट 4 स्टार है ये गेम में. ये क्या है? और ये क्या है? शैंगलिंग. ये शैंगलिंग तो फ्री में भी मिलती है वैसे अभी इसमें. आई थिंक गो फॉर सिंगचो. इधर बैठे जाओ क्या? चलो बैठ गया. You enjoy fantastic meal as well as a wonderful performance. अच्छा जी. Hello.
Navia, did something happen? Oh, no, not at all. I just figured that since we don't get to enjoy nights like these very often, we should try to enjoy it to the fullest. आजा Wanna आजा. go fishing? I've got some rods and lures ready. फिशिंग करने ले जाएगी यार ये. Prep you were talking about. Sure, we'll come. Hopefully I didn't wake you or anything. You are good. Since the invitation is coming from you, I knew it. You really are my best partner. फ्लर्ट तो करेंगी ना. Okay, नाविया है. let's go to the fishing spot. अरे भाई साहब, इतनी दूर ले जाएगी क्या यार फिश करने तो यार. मेरे को एक्चुअली ये सब का वो मटेरियल चाहिए. मार लेता हूँ इन लोगों को. Strike a pose! Dissipate! Let's move out. Everyone hold hands. ले भाई, दूर पड़ा वो तो यार. भाग रहा है. ए रुक जा भाई, मटेरियल चाहिए मेरे को. I see everything. कैसे छुप रहा है जमीन में. आजा भाई. Allow me. Get with me! यार इसने नहीं दिया. सैड लाइफ. अरे यार, देख लिया क्या तुम लोगों ने मेरे को. क्या काया और रोजरिया कौन ज़्यादा अच्छा होगा अपग्रेड करने के लिए? वो आपके टीम के ऊपर है. अगर आपको फ्यूचर में ये कैरेक्टर लेने की इच्छा हो ना, ये कैरेक्टर देख रहे हो, सो मच प्रीटी A कैरेक्टर, blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. तो आप रोजारिया को अपग्रेड कर सकते हो. रोजारिया काम आती है उसके लिए. How can you call this fishing when you're using a fully automatic rod? What's the problem? Lots of people in Poisson use rods like these. But shouldn't fishing be all about, you know, attentively watching the float and then excitedly reeling in the catch when you finally hook something? Well, that's one way to enjoy fishing. What do you think, Traveler? I like Poimon's method. Manual all the way. Then let's try regular rods next time. फ्री में 5 स्टार We कैरेक्टर can मिल have a सकता है. real fishing competition. नहीं, Honestly, Paimon's mainly shocked at how much energy he's कैंशिन been वाले having फ्री this में कुछ hour. नहीं देते ब्रो. Usually by this time of night, it's a struggle for Paimon to even keep her eyes open. Huh. It might just be something that runs in my family. That's a thing? I'm sure you'd get even sleepier if I delved more deeply into it. Anyway, I was just thinking about how grateful I am to my mother, as well as the rest of the Spina. Your mother? My father always had a lot of unrealistic expectations for me. But the more that he tried to get me to become like him, the less I wanted to listen to what he had to say. My mother never had those kinds of expectations, though. I've heard that she had only one wish for me,
which was that I would have a happy and secure childhood. All the members of the Spina greatly respected her wish, so no matter what I did as a child, they were happy to humor me. Can you imagine? Whenever my father wanted to scold me for something I'd done, everyone would form up into 2 rows and just stand silently and listen to him rant. Malus and Silver were always there too. No matter what Papa yelled, nobody else would say a word. Eventually, Papa must have recognized scolding me over trivial matters was pointless, because he eventually stopped getting on my case so often. Paimon would have never guessed. Yeah. Looking back on it now as an adult, I can hardly believe how patient and kind everyone was. बात सही है यार. When I was young, I often thought that I could do whatever I wanted, because there'd always be someone there to clean up after me. But once, I saw Malus come back wounded. He wouldn't tell me how he'd been injured, but I could tell it had something to do with me. I learned then that there's always a cost. Can I to play making without a investment mistake. in game? Obviously. The more you care मैंने भी about 1 those रुपया around खर्च you, नहीं करा इसमें. the more you should care about doing It's the just right you have thing to to the best of your abilities. Because save patiently. if you do falter, there'll inevitably come a time when you'll have to face the consequences. And when that time comes, those most precious to you really will throw themselves in front of you and pay the price for your mistakes. लाइक ऐसा नहीं कर सकते कि आप हर बैनर पे पुल करो और आपको सब कैरेक्टर्स मिल जाएंगे. आपको सेव करना पड़ेगा प्रीमोजेम्स और आपको एक कैरेक्टर फिक्स करना पड़ेगा कि मेरे को ये कैरेक्टर चाहिए. उसके लिए सेव करना पड़ेगा और उसके लिए पुल करना पड़ेगा. समझ रहे हो? आप जैसे जैसे खेलोगे ऐसे ऐसे आपको पता चल जाएगा. नाविया, इट मस्ट स्टिल बी रियली हार्ड फॉर यू. Sorry. I shouldn't have brought that up. I wasn't planning to talk about sad things tonight. Basically, I was just saying that the nurturing atmosphere of the Spina must have been my mother's legacy, rather than my father's. And if that's the only way that I can continue to feel her love, then I'd like to pass that warmth on. Is that why you let those guys go today? Although, maybe there's a part of not wanting to repeat the mistakes of the past. I want to be reasonable, at least. इतने विश पर एक 5 स्टार कैरेक्टर मिल जाएगा. देखो उसके लिए आपको इसका ना विश सिस्टम समझना पड़ेगा. इसमें कैसा रहता है कि जो एक बैनर आता है, ठीक है, जैसे अभी शिन्यून और नाहिडा का बैनर चल रहा है और कंफर्म गारंटीड आपको 90 विश में एक 5 स्टार मिलता है. ठीक है, वो 5 स्टार या तो ये बैनर वाला हो सकता है, लाइक आपने नाहिडा पर पुल किया नाहिडा वाले बैनर पर, तो वो या तो नाहिडा हो सकता है या तो वो जो स्टैंडर्ड बैनर है ना उसमें से हो सकता है. ठीक है, अगर आपको नाहिडा वाला मिल गया दैट मीन्स आप 50-50 जीत गए. 50-50 चांसेस रहते, समझ रहे हो. और अगर आपको दूसरे वाला मिला जो बैनर का नहीं है तो दैट मीन्स आप 50-50 लूज़ किए हो. ठीक है, अगर आप 50-50 हारे हो एक बैनर पे तो जो आप नेक्स्ट बैनर पे पुल करोगे वो कंफर्म मिलेगा आपको. जैसे कि अगर आप नाहिडा वाला बैनर पे 50-50 हारे हो, ठीक है, तो आप फिर शिन्यून के बैनर पर पुल करोगे तो आपको शिन्यून मिल के रहेगा. और सेम वैसे ही अगर आप नाहिडा पे 50-50 जीत गए हो, लाइक 90 विश किया आपने 5 स्टार मिला और आपको नाहिडा ही मिली, दैट मीन्स आप 50-50 जीत गए हो. और अगर आप शिन्यून पे विश करोगे तो उसमें भी सेम रहेगा 50-50 चांसेस. या तो आपको शिन्यून मिलेगी या तो वो स्टैंडर्ड बैनर वाला 5 स्टार मिलेगा ऐसे. बट एक्चुअली कई बार अर्ली भी मिलता है अगर आपका लक हो. और ऑलमोस्ट 70-80 के आसपास 5 स्टार मिल जाता है. पूरा 90 रेयरली जाना पड़ता है 90 विशेस, या मतलब 70 विश पे मिल जाता है. बट आप टोटल की बात करो ना तो 180 विश पे एक गारंटीड 5 स्टार मिलता है आपको बैनर वाला. अगर आपका लक और आप 50-50 जीत जाओ तो आपको 90 से नीचे के विशेस पे मिल जाएंगे. और अगर आप हारते हो तो आपको इतना दिमाग पे रह के गुनना पड़ेगा कि 180 विश पे एक गारंटीड 5 स्टार मिलेगा आपको. समझ गए? Hey, look! I think you've got something on the line. But
Oh, there must be something wrong with how I installed the mechanism. It was my first time putting one of those rods together. We can't let it get away. Come on, you two. Let's catch it. You want Paimon to help too? पाइमन भी लाइक मैंने जिंदगी में कभी हेल्प नहीं की, अभी हेल्प करूंगी मैं. After some time, you finally manage to reel in the prize catch together. For the rest of the night, your rod continues to rack up catch after catch, while for some reason Navia can't seems to hook a single fish. Navia is quite upset about her bad luck, but it's only when you begin to head back that Paimon discovers the real reason to the mystery of why she didn't get a single bite. You didn't attach a hook to your line? अरे भाई इससे हुक ही नहीं लगाया था, फिर कैसे मिलेगी मछली? शीश मैन. Stop wasting time. The boss ain't gonna wait all day. अबे ये वही Go है. ahead with the operation tomorrow. Do with that मेरे को लगा information as ये you wish. आया इसके बाद ही ये सब चालू क्यों हुआ. भाई यही बंदा है भाई, ये बंदे में गड़बड़ है. फोर्ट्रेस ऑफ मैरोपीड से आया ये बंदा. मेरे को सस्पिशियस लगा ही था ये बंदा. कॉल्टर भाई पकड़े गए हो आप, बता रहा हूँ. Well, your rod was missing a part too, so I guess that makes it fair. Well, if we're just talking about the number of missing parts, sure. Oh, never mind. Paimon really can't keep her eyes open anymore. All right, go to bed. I had a great time today. See you tomorrow, Navia. See you tomorrow. भाई ये कॉल्टर भाई तो सस्पिशियस थे, मेरे को पता ही था. So how was last night? Did you get a good night's sleep? Paimon dreamt that she danced with the sea stars, so you could say it was stellar. Get it? Huh. And just where did you get that from? I didn't know you had such a great sense of humor. See? This guy gets it! Anyway, let's head out. I'll arrange for a boat to take us back to Poisson. I'm sure Adele will be happy to see you two again. Paimon hopes she'll really appreciate your gift. I hope so too. Let us go to Poisson. Adele, we're back! We brought you a gift from the court, too. Whoa! Thank you so much, boss! Don't call her boss, okay, Adele? Just Miss Navia would be fine. ले भाई ऐसा क्यों? Oh, it's all right. I don't mind. Besides the gift, I've also got another surprise. Guess who's here? It's been a while! Hello again. Oh, it's you two. It has been a while indeed. Thank you so much for your help on Jacques' case. I've heard that you also helped save all of Fontaine. You're truly just like the great heroes of legend. You're really amazing! And if Miss Navia's your friend, then she must be super amazing too! What's in this thing? Can I look? तेरे लिए Of गिफ्ट. course. Go ahead. कपड़े दिए भाई पिना डे रजूला के. Oh, जा पहन के आ जल्दी फटाफट. a Spina di Rosula uniform! Is it for me? But isn't it a bit big? हाँ तो बड़ी होगी तब आएंगी ना. Well, it's a gift for future you. हाँ ना, When अभी you से कैसे first काम told me करवाएगी that you तेरे were से? interested in joining the Spina, I was overjoyed. But it's the Spina's responsibility to protect everyone as well. Being a member means becoming involved in all kinds of dangerous situations. And since you're still young, I don't want your mom to have to worry about your safety. So, I turned you down then by telling you that you'll have to wait until you're older. But this uniform
is a promise that you can join us once you're old enough to wear it. Oh, so that's it. Well, thank you so much, Miss Navia. I'll work hard and grow up as fast as I can. फास्ट फॉरवर्ड कर दिया कि ये लग रहा है. But you can't really grow up faster by working hard. You've got to be patient. Everyone, I'm really grateful that you remembered my daughter's wish and took it seriously. Thanks to the protection of the Spina, even though her father's no longer with us, we've still felt plenty of warmth and security. Oh, it's the least we could do. As long as you live in Poisson, even if you're not an official member, you're still part of the family. Boss! क्या हो गया? कुछ तो करवाया भाई उसने. Is something up, Florent? I've got something urgent to report. Romeu and his folks have gathered outside Poisson and even shipped in a huge pile of explosives. What? Oh my god. Explosives? What do they want? It seems like they've been planning this for some time. We started investigating as soon as we received your letter yesterday. But Romeu and his folks must have gotten wind as well, because they abandoned their former posts before we could even check on them. We investigated their tracks and found out that they're after Poisson. They have smartened up since we caught them red-handed at the court? Seems like they've got no interest in sitting down and talking at all. भाई ये बंदा, We should have gone straight to the ये Maison बंदा फूटा हुआ Gardiennage. है. Sorry, I underestimated the situation. Well, too late now, I suppose. Florent, where are they keeping their explosives? On the hill to the east of Poisson, near the Clementine line. Wait, that mean? They want to blow up the Clementine line? Certainly sounds like it. Romeu and his followers hate the Spina and everything to do with Callus. And the Aquabus was the source of their contention. If they manage to blow up the Aquabus line, all that rubble will come crashing down the hill and straight into Poisson. Are they insane? There's tons of innocent people in Poisson. We have to stop them, Yeah. obviously भाई. If यहाँ से they've been बातचीत planning बंद this करो, for जाओ वहाँ ages, पे they're यार. definitely not going to let this opportunity slip by. We have to issue an evacuation order to the townspeople and get them as far away from the entrance as possible. That should save them from the worst of it. Let's get everyone onto our ship. That should be the safest place. My dear partner, can I leave the Clementine line to you? अरे obviously If the man. explosives do go off, not only would the people of Poisson be in danger, any aquabuses using the line would plummet to the ground. Let's stop their insanity first, then settle the score with them. Got it. Leave it to us, Navia. Please stay safe too. Let's go. मारपीट करने का टाइम आ गया भाई. बहुत बातें सुन Let's ली. go, you two. We've got to act fast. Miss Coralie, please take Adele to the ship. अरे भाई. Watch out, boss! हे भगवान. क्या बंदा है? पीछे से वार करता है, वो भी छोटी लड़की को. यार मतलब उससे तो छोटी ही है ना नाविया. I thought all the annoying little hindrances had left, but I still couldn't get rid of you. भाई ये बंदा भाई मेरे को पहले से सस्पिशियस लगा था भाई. This was all a trick? So that you'd be left alone गुस्सा आ with गया अभी me? मेरे को. I get it now. You knew about their plans all along. You only told us they were doing badly so that we'd drop our guard. Not quite. Though I share their positions on some issues, I've never cared for his more radical ideas. And that's because out of पीछे the से वार करता है entire बे. Spina di Rosula, I only hate you. नाविया सुन Only रहा है आशीष you, भाई, पागल हो Navia. क्या? You better stick close to me. वेलकम टू स्ट्रीम बाय द वे. नाविया को गलत मत बोला, Romeu बता रहा promised हूँ. me that he would leave Poisson alone if I could just take you out. But it was like you were glued at the hip to that pesky traveler. You never gave me a chance to make my move. जब तक मैं हूँ नाविया कोई छू भी नहीं सकता, ठीक है? तेरे टेंशन मत ले. But I swore that I'd kill you, even if it meant being buried with you in the rubble. Why? Only someone as clueless about the past as you would ask such a रोती foolish रहती है दिन question. रात भाई. You रोती never रहती है saw क्या the क्या मतलब है heyday of भाई. Spina di Rosula. बेचारी उससे जितना Nor होता है did you उतना ever करती live है through यार. the golden age of Poisson. But
I saw it all with my own eyes, and then I had to watch it all die, little by little. And it was all because of you, Navia. Clementine died because भूलो of मत you. नाविया ही थी Talus died because जिसकी of you. वजह से हम Malus and Silver कोर्ट died में because पनिश of होने से you. बच गए भाई, And so many more dead. Everyone dead. वरना हम All वहां पे because पनिश of हो you. जाते भाई. ठीक है. शिन्यून है क्या आपके पे? नहीं, मेरे पे नहीं है शिन्यून. मैंने नहीं निकाले शिन्यून. निकाल के क्या ही करूं मैं? शाओ तो है नहीं, पूता है सिर्फ. मेरे को मजा नहीं आया शिन्यून का गेम प्ले में. So the shock and grief you showed us before, that was in Act 2? Now you're catching on. I heard Malus was dead the moment I got out. Did you know? Down there in that blasted fortress, I spent a long time thinking about what happened and resolving to apologize to Malus as soon as I got out. Back then, because भाई of that उसमें नाविया outburst, की थोड़ी we ना had a गलती थी huge भाई. fallout. I was convinced that ये all क्या he बात है? cared about was loyalty, Some and that he brainless completely people's lost his man. capacity for critical thinking. The years passed by in a blur after that. I thought I had finally begun to understand him, and that he could help me relive the good old days again. हाँ, मैं वही कह रहा था. शिन्यून एक्सप्लोरेशन के लिए पुल करना वर्थ इट रहेगा. वंडर्स जैसी, हाँ एक्सप्लोरेशन के लिए तो वर्थ इट है, क्योंकि ऊपर ऊपर चढ़ जाती है. मस्त है, कैरेक्टर अच्छी है, पर जिसके पास लाइक एक्सप्लोरेशन करने का टाइम है, और फिर जो लोग एक्चुअली एक्सप्लोरेशन करते हैं और जिसके पास उसके लायक डीपीएस है, जैसे कौन से हैं? एक तो शाओ है, फिर कौन है? हुताओ है, और कौन है? डीलू क्या, आई थिंक. हाँ, उसके लिए अच्छी है, उन लोगों के लिए. वाइड रेंज नहीं है जैसे काजुआ की है, समझ रहे हो? इतनी वाइड रेंज नहीं है उसकी यूजिबिलिटी की. But then he died, and it was because of you again, Navia. It's always because of you. पागल है क्या भाई? फट्टू साला. मैं गया तभी पीछे से वार करता, वो भी I पीछे से. once उसको loved पता है the सामने से Spina नाविया and एक फटका देगी मैं more मर than जाऊंगा. anyone else. पीछे से वार But करता है, what is left now और of वो भी either मैं गया besides उसके बाद. death and ruin? छी, You've बेशरम. single-handedly destroyed everything that was beautiful, everything I've ever loved. आए Don't listen to him, boss. क्या बोल रहा He's है? just spouting nonsense. कितने दिन Have बचे you बहन ever को पता नहीं यार, considered देखना that पड़ेगा. maybe the people around you don't actually care about you at all? Have you Bye. ever considered that maybe you only get respect because you're Callus and Clementine's child? That you've never done anything worthy? That you're just a big nothing? भाई एक ब्रोकन बंदी को ये ऑल ब्रेक कर रहा है, ऑल ब्रेक कर रहा है ये. छी, मतलब हद होती है भाई. कितना गिरा हुआ बंदा है. छे छी 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 छी. Have you ever considered that maybe people don't stay in Poisson because of you, but only because they have such beautiful memories of the past before you came? हाँ, तो उस पे विजन नहीं है, इसीलिए पीछे से मारा. विजन होता तो कब का मार के चला दिया होता भाई. तो विजन उन लोगों को मिलता है जो वर्दी होते हैं, ठीक है? ये वर्दी नहीं है विजन का, तभी इसके पास नहीं है. Because if you do falter, there'll inevitably come a time when you'll have to face the consequences. यार बेचारी And बंदी when यार, that एक time तो ये comes, छोटी है भाई, those most precious to you, इसको then they will सपोर्ट करना throw चाहिए. themselves in front of you and pay the price for उसके your own बदले ये mistakes. उसको और गिरा रहा है. छी 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 छी. Yeah, looking back on it now as an adult, I can hardly believe how अंदर जाके patient मारूंगा इसको, तो मैं and बता रहा हूँ. kind everyone was. But is that really why they support me? Is their kindness real? Shut your mouth! I, for one, really like Miss Navia. ये लो, My mom छोटी loves लड़की her को भी too. पता है इससे क्या क्या किया है. I don't know how to explain it, but I like her, and that's that. I'm sure Mr. Malus would be extremely disappointed in you right now. बात तो है. You've somehow managed to pin the blame for every mistake and tragedy in our history on the boss herself. उसने तो कुछ किया Get भी out of नहीं है, the way, बेचारी Paul. छोटी थी भाई. I don't want to hurt you. You're gonna have to. Boss, लॉरेंट there's भाई, no time for this. Stop कुछ hesitating होना and नहीं get चाहिए, out of here नाविया को before you बता get रहा हूँ. buried. Maybe you think you're being the realist by painting the history of the Spina and Poisson like this. But the love that I felt from everyone was just as real. I felt it. They've helped me get to where I am.
And even now, I will continue to believe in that love. So let me show you just how much I love the Spina di Rosula. दिखा दे नाविया, हो जाए आज तो दो हाथ। रुक भाई, मेरे को चैट पढ़ने दे पहले। वर्थ होने से नहीं मिलता, किसी को बैठे बैठे मिल जाता है, किसी को दूसरों के लिए अपनी लाइफ रिस्क करके भी नहीं मिलता। वो तो यार हम कुछ नहीं कर सकते ना, जैसे पर आपने वो किया था क्या, राना वाला स्टोरी क्वेस्ट किया था क्या, मतलब वर्ल्ड क्वेस्ट, उसको नहीं मिला, उसे कितनी मेहनत की पता है, तभी उसको मिला। तो कुछ करना पड़ता है भाई, विजन ऐसे नहीं मिलता। ऐसे ही सभी लोगों को उठा के विजन दे दो, ऐसे जैसे जो ब्रेन डेड बंदे हैं इसके जैसे, उसको विजन मिल जाता तो ये तो क्या कुछ नहीं कर देता, समझ रहे हो? वो कहने का मतलब है। पट हटो यहाँ से, आउट। इसको मारूंगा पहले, इसको आराम से मारूंगा, अल्ट मारूंगा। अच्छा आते ही रहेंगे लोग। तो कितने बंदे लेके आए भाई? ये ले अल्ट खा। कहाँ गया? पीछे छुपा है, पीछे छुपा है पागल। इजी बे। Laurent, I'll leave the town to you. Summon the other members and help with the evacuation of the townspeople. सुमेरु में तो मिलता है शायद, बस सोचना पड़ता है कि काश मेरे पास विजन हो। लीसा को भी वही मिला था। If you find any of Coulter's accomplices, subdue them quickly and don't give them जो the बंदे chance अच्छे to होते हैं harm उसको any विजन ordinary मिलता है भाई, civilians. समझ लो। I can't allow my partner to face the danger on the Clementine line alone. Got it, boss. I'm on it. Are you okay now? और जिसको होयोवर्स देना चाहती है उसको मिलता है, वो बात अलग है। या I don't know, but I have to go. क्लेमेंटाइन लाइन पे जाना पड़ेगा, हम पहुंच गए वहां पे। Let's hurry up there. We have to protect the Clementine line. If they're gonna blow up the waterway, they must have planted the explosives next to the support pillars. हो सकता है। पॉइमन ने पहली बार दिमाग तोड़ा है बे, वाह क्या बात है यार। हाँ बीच में बंदे भी रखेगा ये लोग। ओके मैन, I mean why not? Shower me with that. Our bond is strong. Everyone hold hands. I'll settle this. Stand with me. They certainly brought a lot of muscle. They're really slowing us down. But if we're meeting resistance, we must be heading in the right direction. ये रहा। Hey! Allow me. एक सेकंड में गायब हो गई। These must be the explosives, right? And this is the control mechanism. How can we disable it? मेन कैरेक्टर किसको रखना चाहिए 4 स्टार में? मतलब मेन डीपीएस आपके पास कौन से 4 स्टार है उसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ का कटसीन मस्त है। हाँ क्या 3 हीलर लेके घूम रहे हो? Oh, Paimon's too scared to touch any of this stuff. यहाँ पे की लगेगी। What's this? Huh? There's a strangely shaped hole here. What is it for? Could it be some kind of keyhole or maybe an emergency switch? Oh, that certainly sounds possible. Maybe one ये of the कैसे people पड़ा है in वहाँ पे Spina पीछे? has the What the key. heck? Okay, you take this side, Paimon will take the other. Let's see what we can find. Look for the key. Okay, तेरे पास है क्या है? पैसे दे रहा है ये तो। ले भाई पॉइमॉन मिला क्या? नहीं है, इधर भी नहीं है। तेरे पास ही रहेगा यार, लास्ट वाले के पास ही मिलता है मेरे को। That's amazing. तो तू कुछ करेगी वहाँ पे? क्या कर रही है खड़े रह के? 3 बंदों को मैंने देख लिया, वैसे 4 को देखा। जियो को रखना चाहिए। नहीं जियो को नहीं रखो अभी के लिए। अभी यार जियो के ना इतना अच्छे कैरेक्टर्स आए नहीं है। Navi and Florent should be able to relax अच्छा now. मेन कैरेक्टर में कौन सा एलिमेंट रखे, ऐसे बोल रहे हो क्या? या कैसे बोल रहे हो, मेरे को समझा नहीं। वी शुड स्टिल चेक आउट द
पैरामीटर जस्ट इन केस। Oh, अच्छा you're right. They could have set explosives elsewhere too. बात तो है Let's यार, go. आजू बाजू देख लेते भाई, इन लोग का भरोसा नहीं। अरे वेट व्हाट, ओसोन में जा रहा है ये ट्रैवलर? इतना तेज भागती है क्या तू? अबे इसने जियो वाला यूज किया क्योंकि मेरे पास जियो था अभी, या ये अलग यूज करती, मेरे पास अलग होता तो। Just leave the rest to me. Watch out, Nadia. You can't block them all. Look, I'm doing this the Spina way. ये नाविया इन एक्शन, लेट्स गो। ओ भाई ओ Navia, are you okay? Yep, she. भाई साहब, that was some cutscene man. Nice one. हाँ, मेन एलिमेंट कैरेक्टर कौन सा अच्छा होगा डीपीएस के लिए? ट्रैवलर के लिए जियो अच्छा है और डेंड्रो अच्छा है, बाकी सब बेकार है। They were once a part of Spina di Rosula. Do you plan to settle this privately with them? I have nothing more to say to them. Regardless of whether their hatred and anger towards me or नहीं, the Spina cutscene was के justified. Anyone who's ट्रैवलर willing सब to एलिमेंट्स यूज endanger कर innocent सकते हैं एक से civilians ज्यादा भी। is हाँ no बात तो है, longer sane मतलब enough to even नॉर्मली be worth ट्रैवलर trying to इस talk कटसीन to. में जियो यूज करती है ना। ठीक है ठीक है, मैंने सोचा मेरे पास जियो है तो जियो यूज किया, मतलब व्हाट कोइंसिडेंस, मेरे पास अभी ट्रैवलर का जियो ही था और उसने इस कटसीन में जियो यूज किया, समझ रहे हो? Please prosecute them in accordance to the law. Spina di Rosula will not raise any objections. हाँ भाई, डाल दो जेल में फिर से। We're very appreciative of your help. Without it, the consequences. ये बंदा आज इस फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपिड से बाहर आया था तो कॉल्टर फिर से गया, मतलब आज नहीं कल आया था आई थिंक, या एक दिन हो गया, कल आया था आज फिर से गया। पागल। All right, this operation is a wrap. Take him away. We won, Navia! We saved everyone! And you were भाई so नाविया का cool. कटसीन मस्त था पर। Yeah. Luckily, we were just in time. भाई पर ट्रैवलर किधर से किधर की पता है? हम आए हैं जितनी देर में उतने 5 सेकंड में वो इधर से उधर पहुंच गई भाई। नाइस, ट्रैवलर स्ट्रांग हो रही है हमारी। तो मैं एक्सप्लोरेशन के लिए शिन्युन पुल करूँ कि शाओ के लिए सेव करूँ? अगर आप शाओ पुल करने ही वाले हो तो शिन्युन पुल कर ही लो, मैं तो बोलता हूँ। समझ रहे हो? तो दोनों काम हो जाएगा। आपके पास फारूजान है क्या? अगर आपके पास C6 फारूजान है तो शाओ के लिए सेव करो, वरना तो शिन्युन पुल कर लो, मैं तो बोलता हूँ। फिर आपका 50-50 पे ऊपर जाएगा कि शाओ मिलता है या नहीं मिलता है। ट्रैवलर इन कटसीन, ट्रैवलर इन द गेम, पक्की बात है। यू लुक अ लिटिल पेल। हाँ, अंदर जो बात हुई है मैंने Probably because I expended too much सुन ली elemental होती ना। energy at once. I'll be fine. Don't worry about अंदर जो बातें वो ट्रैवलर के जाने के बाद हुई, अगर वो बातें ट्रैवलर ने सुन ली थी मुक्का मार देती, उसको बता रहा हूँ। But you usually glow up whenever other people compliment you. Paimon's not used to seeing you like this. Boss, we managed to catch all the infiltrators in the town. The Maison Gardiennage is taking them away as well. ले जाओ, ले जाओ। Seems like Romeo really went all in on this mission. If he sent literally everyone he had, though, that also means we've caught them all too. We won't have to worry about them from now on. it. Got it. That's good at least. भाई नाविया ने जो उड़ाया है भाई। हे, अभी इसको बाहर मत आने देना, तुम लोग, बता रहा हूँ। फोर्ट्रेस I ऑफ can मेरोपिड से। understand how you feel.
The things that we lost, they're forever beyond our grasp now. And that makes them appear even more precious. I am not callous, and I will also never become him. The Spina and the Poisson that you loved are both gone. C1 फारूजान है, दोनों नहीं कर सकता। फिर काजुआ भी आने वाला है, शाओ के लिए सेव कर रहा हूँ। हाँ, तो अगर आपको डीपीएस चाहिए ना तो आपको शाओ पुल कर रहा हूँ, छुट्टी है उसमें। ठीक है, पर ज़्यादा बेटर काजुआ है। और डाइवर्सिटी के बारे में बात करें ना तो काजुआ बहुत टीम में चलता है। इन द अदर एंड शाओ की खुद की टीम होगी, उसमें आपको सब कुछ लाइक बिल्ड करना पड़ेगा। लाइक आपको बैनेट बिल्ड करना पड़ेगा, आपको वो क्या बोलते हैं फारूजान C6 करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा आपको। और एक शील्डर भी चाहिए, तो वो आपके ऊपर है फिर आपको कौन सी टीम ज़्यादा पसंद है। I will not change how I feel about our future. और आपके पास अगर शाओ है ही नहीं I तो still फिर believe शिन्युन that का this is मतलब a नहीं है ना, great opportunity to start anew. क्योंकि शिन्युन क्या करती है, सिर्फ हील करती है और प्लंजिंग डैमेज बढ़ाती है। ठीक है, तो प्लंजिंग डैमेज बढ़ाने के लिए प्लंजिंग कैरेक्टर तो होने चाहिए, जो कि एक मेनली शाओ है। चल सकता है डीलुक और थोड़ी थोड़ी हुताओ है, तो दैट इज द केस। पर उसमें फिर हुताओ लाइक शिन्युन की अल्ट मारोगे वो हील कर देगी, हुताओ की एचपी फुल हो जाएगी, हुताओ का डैमेज कम हो जाएगा। ऐसे ही हुताओ का जितना एचपी कम रहता है उतना डैमेज ज़्यादा आता है। I will spend more of what the Spina earns on the betterment of Poisson. What's more, I'd also like to propose some changes to the Aquabus routes, so that one वैसे day शाओ प्लंज से इम्यून है the क्या people बिना of बर्स्ट के? Poisson will मतलब enjoy the boons it brings as well. I know what you're trying to say. Mr. Callus would never have said anything like that. There are too many things in life that are just beyond our control. In that, we are the same. Henceforth, you are no longer a member of Spina di Rosula. But once you're discharged from the fortress again, you're welcome to pay another visit to Poisson. मैं तो बोलता हूँ Thank मत you, बुला भाई इसको। Navia. मारने का ट्राई किया है, मतलब हाइट से प्लंज करेगा तो डैमेज मिलेगा, वो तो फिजिकल डैमेज देगा फिर। As I अल्ट तो thought, मारनी पड़ेगी ना, Boss really is a kind and gentle person. बस्ट पे नहीं मिलता She शायद is है। also, I must say, a truly unlucky person. Thank you for protecting the Clementine line. I was actually really scared, you know. I mean, even मेरे the को पता नहीं Callus है, ऐसे line मैंने won't be getting शाओ rebuilt का anytime गेम प्ले soon. इसके साथ देखा नहीं कैसे If यूज I'd होता है, lost पर the आई थिंक Clementine line कि too, I wouldn't इसका know अल्ट how to उसके live बाद with शाओ का myself. अल्ट और फिर ऐसा सब A कुछ। name is a way to etch a memory onto the world. मेल्टिंग अटैक Losing के the लिए land that bears her शैंगलिंग name, और रुजेरिया that I यूज can कर see सकते हैं, every day, कर सकते हैं would ना be like भाई। losing my mother all over again. आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, Soon राइडन और still आया का? standing there, दोनों। tall and proud. It makes me really happy. What happened while we were gone? Honestly, you look more upset than tired or anything. Just give her some time. It's okay, everything's fine now. I'll get you back to Poisson. Thank you so much. Can you give me a hand? I really don't have much strength left. बेचारी यार। Traveler, I want to ask you something. And please, tell me the truth. Do you ये really see me as your partner? ऑब्वियसली Of भाई। course. ए ट्रैवलर That's बोली, good then. ए मेरी बोबड़ी बोली। It brings me more relief than I can say. How do you feel, Navia? Any better after taking a break? मैं बस गेमिंग चेंजिंग कैरेक्टर पुल करता हूँ। नाइडा राइडन न्यूवी फिरिना वाला आया तो गलती से मिला, कुछ काम का नहीं। नहीं आया तो काम का है, ऐसी बात नहीं है यार, पर यू कैन से दैट कंसिडरिंग द कैरेक्टर्स यू हैव पुल्ड। लाइक आपने जो पुल किए वो सब ब्रोकन है, उसके कंपैरिजन में आया तो कम अच्छा है। पर हाँ, आया तो का रेंज है ऐसे फ्रीज टीम में लाइक और ब्लूम टीम में सब में है आया तो।
शेंगलिंग ये साथ किसका कॉम्बिनेशन अच्छा होगा? शेंगलिंग खुद एक कॉम्बिनेशन है दूसरे डीपीएस के साथ, समझ रहे हो? 7 की पीटी में मिला था, गारंटी भी खा गया। पीटी बिल्ड करने का ये गैर फायदा है। I feel quite a bit better. But I should probably still rest for a few more days. Sorry, partner. I said some weird things earlier. Feel free to just ignore me. A little weird, that's true. But that's because I have never heard you doubt yourself before. I used to think that I'd never उसने जो doubt बोला वो myself. दिमाग में तो रहेगा ना यार बंदी के। But सेल्फ डाउट you बहुत could ही say गंदी I've चीज होती है। discovered that I'm एक not बार as दिमाग में strong घुस as गई I ना वो thought I निकलती नहीं है was. फिर। Coulter mentioned my parents, as well as Malus and Silver. It's all thanks अभी to इसमें them काम that I've made कर it this सकता है far in क्या life. आयतो एंड शाओ? नहीं Do नहीं, you think आयतो और शाओ का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। they ever regretted the choices they made? मैं बोल रहा हूँ ना, आयत Has my शाओ existence कैसा कैरेक्टर है कि वो डीपीएस है, made उसके लिए this ना, world a better place? उसके लिए आपको उसके अराउंड टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। शाओ के लिए देखो बेनेट मस्ट है, क्योंकि बेनेट उसका डैमेज बढ़ाएगा, ठीक है। प्लंज शाओ का बेसिक क्या है कि ई से आप उसकी एनर्जी लो, अल्ट भरो और प्लंजिंग अटैक मारो, ठीक है। वो डीपीएस है, मेन डैमेज वो देता है। तो उसके अराउंड आपको पहले टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। लाइक उसके लिए आपको बेनेट चाहिए जो अल्ट मारेगा, उससे आपका शाओ का डैमेज बढ़ेगा। फिर आपको फारूजान चाहिए, C6 फारूजान हो तो बहुत अच्छा है, वरना फारूजान भी कुछ एनिमो डैमेज बढ़ाती पता नहीं मेरे को, वो भी चाहिए। और एक शील्डर चाहिए, क्योंकि जब वो प्लंज मारता है तब वो ना हो जाए, क्या बोलते हैं, उसका प्लंजिंग अटैक में वो मार ना खा जाए। कंटिन्यूस प्लंजिंग अटैक जितना मारेगा उतना ज़्यादा डैमेज आएगा ना एक साइकिल में, उसके लिए आपको एक शील्डर चाहिए। आयतो कैसा है? आयतो का डीपीएस भी वर्जन है, आयतो का एलिमेंटल मास्टरी भी वर्जन है, क्योंकि डेंड्रो आ गया ना उसके बाद पूरा गेम स्टाइल चेंज हो गया आयतो का। और ब्लूम में भी काम आता है। वाटर लगाओ, अल्ट मारो, वाटर लगाओ, ई मारो, और पहले डेंड्रो लगाओ, फिर उसका अल्ट मारो, फिर ई मारो, वाटर लगता रहेगा, उसका वो कोर्स बनता रहेगा, और ब्लूम या हाइपर ब्लूम जो भी आप एक्टिवेट करो वो लगता रहेगा। आयतो का ऐसा सीन है कि दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। शाओ का तो क्या है, वो एनिमो कैरेक्टर है, ज़्यादातर उस एनिमो की रिएक्शन होती नहीं है, और ऑब्वियसली वो डीपीएस है, तो उसके अराउंड आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। Don't think like that, Navia. You've already done more than enough. देखो शाओ की बेस्ट टीम क्या है? बेनेट जो अच्छा खासा वो बफ करे, C6 फारूजान जो बहुत अच्छा खासा बफ करे, और जोंगली जो एक अच्छी खासी शील्ड दे, समझ रहे हो? No matter what others think, we'll always support you to the end of the world. ये शाओ की आइडियल टीम है। अगर ये टीम हो गई आपकी टीम खत्म। Well, since it's ended up like this, I suppose it's time for me to make a confession as well. There's something that I've been keeping from you as well, boss. Please, follow me. Everything is already prepared. स्टैचू बना दिया क्या? Don't tell me statue बना दिया। understand that I can't deal with any more shocking revelations. अभी इसमें काम नहीं करेंगे तो क्या मतलब? बात तो है ऐसे, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आप जो कैरेक्टर्स पुल करो, अगर आपको अबिस करना है, ठीक है, पहली बात तो आपको अबिस करना है, तो कैरेक्टर्स ऐसे पुल करो कि जो आपके अबिस में काम आए, और उसके अराउंड टीम बिल्ड करो आप। इधर अंडरग्राउंड है? अच्छा, अंडरग्राउंड। लगता है मुझे गेंशिन समझने के लिए 1 साल गेम का क्लास लेना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा गेंशिन का थोड़ा सा सीन है, आपको समझने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे न्यू प्लेयर्स आते हैं ना, उन लोगों को समझने का टाइम लगता है, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स बढ़ गए ना अभी, और इतने सारे मैकेनिक्स आ गए, इतने सारी टीम वो आ गई, टीम की सिनर्जीज आ गई, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। Breathtaking. स्टैचू नहीं, कुछ और दिखाएंगे, ठीक है। शाओ फारूजान, शिन्युन, शाओ की मम्मी, जोंगली, शाओ के पापा। हालात देख लो। लाइट भाई व्हाट्सअप, वेलकम टू स्ट्रीम, के हालचाल? ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 वीक्स में। हाँ मतलब बोल सकते हो, हाँ मतलब जैसा है, फिर एक्सपीरियंस के ऊपर है ना वो, तो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करोगे वैसे वैसे बढ़ता रहेगा। क्या मिल गया मेरे को इधर? अच्छा, ये मिला क्या?
ओ लोग खड़े इधर, नाविया की जय जयकार Why करेंगे is अभी। everyone gathered here? And बेचारी का what's साउंड अभी भी लो चल रहा है बे। this? This was supposed to be a gift to you from everyone in the town. We अभी were भी लो साउंड originally कर रही है वो। planning to show it to you once it was finished, but special अब times जब call for जियो special अपडेट आएगा measures. तो और कॉम्प्लिकेटेड हो I've never जाएगा। seen you look so defeated शियोरी भी before. आ रही है ना, मेरे को So शियोरी I've पुल decided करने to की show इच्छा you the सी हो रही designs है। before the final product was done. थोड़े से जियो कैरेक्टर चाहिए मेरे को, नाविया है मेरे पास सिर्फ और निंगवांग है सिर्फ। शियोरी देखते कैसी रहेगी। नेक्स्ट अपडेट सेकंड फेज तक सेव कर रहा सेव क्या कॉम्प्लिकेटेड होगा, मोर जियो रिएक्शन, मतलब गेम स्टाइल ना, लाइक पहले कैसा था, जियो सिर्फ जियो की साइड चलता था, ठीक है। अभी नाविया आ गई, नाविया का कैसा गेम स्टाइल है, उसके लिए वो जो गन्स की वो रहते हैं ना पार्टिकल्स, उसके लिए रिएक्शन चाहिए, इलेक्ट्रो हाइट ओवरलोड या ऐसा कुछ, ऐसे कुछ और भी वो लोग डाल सकते हैं, समझ रहे हो ऐसे। वैसे जियो का इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं क्योंकि उतना है नहीं उसमें। गेम का कोई एंड है, गेम का एंड है ना, लाइक अभी हम मॉन्स्टर घूम के आए, ल्यूवे घूम के आए, इनाजुमा घूम के आए, सुमेरु घूम के आए, फाउंटेन घूम के आए, अभी नेक्स्ट जा रहे हैं हम नाटलान पे, उसके बाद जाएंगे स्निजनाया में आई थिंक सो, और उसके बाद पता नहीं होगा 2026-27 पे एंड बहुत साल लगेंगे अभी तो। एक तो इतने कैरेक्टर्स हो जाते समझ नहीं आता किसको पुल करे किसको बिल्ड। हाँ अभी तो बहुत दिक्कत है, न्यू प्लेयर्स के लिए बहुत दिक्कत है अभी कि किसको पुल करे, ये पुल करे वो पुल करे। लाइक अभी जैसे कि नाहिडा है, अब अगर न्यू प्लेयर ने गलती से नाहिडा पुल कर लिया और वो बेचारा झूल रहा है इनाजुमा पे, तो उसको इनाजुमा कंप्लीट करना पड़ेगा। सॉरी हाँ मतलब शायद ल्यूए पे झूल रहा है तो ल्यूए पुल कंप्लीट करना पड़ेगा, इनाजुमा कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद सुमेरु में जाना पड़ेगा, उसके बाद वो अपग्रेड कर पाएगा, ये सीन है। यस जियो में और रिएक्शन ऐड होंगे, एक ही रिएक्शन है बस अभी। गेम का एंड नहीं है, जीटीए जैसा ओपन वर्ल्ड है, नहीं गेम का एंड आएगा ना, स्टोरी का तो एंड आएगा, लाइक खेल तो पाओगे आप पर एंड हो जाएगा गेम, पर वो भी टाइम लगेगा। पर ये लोग होएवर्स वाले पता नहीं क्या करते रहते हैं। अभी देखो होएवर्स वालों की एक और गेम है वो होंकाई थर्ड, वो लोगों ने कंप्लीट कर दी, उसके बाद उस लोगों ने होंकाई थर्ड पार्ट 2 करके नई वो डाल दी गेम करके, ऐसा सीन है। तो वो होएवर्स के ऊपर है कि वो लोग कब कंप्लीट करेंगे इसको। ना नाहिडा तो बिना इनाजुमा जाए कर सकते हैं, ल्यूए से डायरेक्ट सुमेरु चले जाओ भाई, ये क्या बात है। सब अपने फर्स्ट डीपीएस बिल्ड करते रहते हैं अपने क्या, मैंने किया ना, मैंने जब भी गेम स्टार्ट किया था ना तभी आयका का सीन था, लाइक आयका का बैनर था, तो मैंने आयका पुल किया, तभी मैं झूल रहा था ल्यूए पे, तो मैंने ल्यूए कंप्लीट किया, फिर इनाजुमा में जाके आयका का वो सब फार्म किया और उसके बाद वो बिल्ड किया। हाँ मैंने अपने दोस्त का करवाया, क्या बात है यार। Do I really look that bad? Well, if you're ready, I'll unveil the present. मेरे को तो फाइनल बॉस देखना है भाई, क्या रहता है। कैलस है क्या ये? ओह कैलस और क्लेमेंटाइन, वो साथ में नाविया भी है, नाइस वन भाई, मस्त पिक्चर बनाई बे इन लोगों ने, ग्रेट। हाइपर ब्लूम अटैक कैसे होता है बताता हूँ। This is न्यू कंपनी, Papa, कौन सी न्यू कंपनी? Mother, and me. यस एंड यू, अपने आप पे भरोसा रख, यू आर द बेस्ट। मैं हेजू में था तो अब इनाजुमा भी नहीं खुला था, लेवल 20 हेजू विथ मैक्स आर्टिफैक्ट्स यूज कर रहा था। हाइपर ब्लूम कैसे यूज होता है? कांड्रिया भी तो आएगा ना, कांड्रिया भी आएगा, पता नहीं क्या कुछ आएगा, कांड्रिया आएगा, फिर वो ऊपर उड़ रहा है वो क्या बोलते हैं उसको, सेलेस्टिया, वो उसका भी कुछ सीन आएगा। हाइपर ब्लूम में कैसा रहता है कि आपको डेंड्रो लगाना होता है, उसके बाद आपको वाटर लगाना होता है, जिससे वो जो ग्रीन ग्रीन कोर बनते हैं नीचे, और वो इलेक्ट्रो से उस कोर को लगना चाहिए इलेक्ट्रो, तो वो हाइपर ब्लूम रिएक्शन होता है। उसकी वो एलिमेंटल मास्टरी बेस्ड होता है, इलेक्ट्रो की एलिमेंटल मास्टरी जितनी अच्छी उतना ज़्यादा डैमेज आता है, और डेंड्रो की भी एलिमेंटल मास्टरी के ऊपर, दोनों की।
अभी तो पायरो नेशन आएगा पहले, लैंड ऑफ ड्रैगन्स, ये नाटलान आएगा पहले. We designed the look for Miss Clementine based on old camera records, as well as personal recollections from members of the Spina. Wow. This is the statue you राइडन mentioned है ना आपके before? पास, है ना मेरे पास. It is indeed. To be honest, we decided on the design a long time ago, and gave the sculptor permission to begin working. We only asked Boss to decide on a design so she wouldn't realize we had already started. How could we only have statues of Mr. Callus and Mrs. Clementine? यार कितने प्यारे बंदे हैं ना Even इनके. though Boss is still young, we've all seen the work she's put in regarding the whole synth business and the इसने 6 मंथ तक पुल नहीं करा था राइडन के लिए. हाँ हाँ, her contributions with the statue as well. मैंने राइडन के लिए ना कितना सेव किया था कि तुम लोग सोच नहीं सकते. C2 राइडन निकाली थी मैंने एज ए F2P, मतलब सोचो कितना सेव किया था. उसकी वीडियो पड़ी होगी, आपको देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाना, गेंशिन की प्लेलिस्ट होगी, उसमें पड़ी होगी राइडन के पुल की वीडियो. भाई राइडन को C2 निकालने के लिए मैंने इतना सेव किया था ना, और मेरे को वेपन भी चाहिए था. अनफॉर्चुनेटली मेरे को वेपन नहीं मिला था, और राइडन C2 तो मैंने निकाली थी. लास्ट विश, इमेजिन लास्ट विश पे मेरे को एक और राइडन मिली थी. भाई क्रेजी था वो. काजुआ चाहिए यार, काजुआ तो चाहिए रहता है. काजुआ इज मतलब वो इतना मस्त कैरेक्टर है ना अभी, इसके लिए लाइफ एकदम आसान हो जाती. मैं बताता था लाइफ कितने कैरेक्टर से आसान होती है. एक नाइडा, एक काजुआ, एक आई थिंक ये लान, और कौन से रहते हैं, एक न्यूविलेट भी है अभी तो. फ्यूरिना न्यूविलेट ब्रोकन कैरेक्टर है दोनों. और फिर तो आपके ऊपर है, फिर जो भी निकालो आप. याई मिको का सोच रहा था, अब काजुआ आ रहा है. हाँ बात है. मैं तो राइडन पे 50-50 हारा था, फिर 15 दिन में 12,800 प्रीमोज 80 विश करके निकाला. ओ भाई, अबीस नहीं काजू फेव है मेरा. हैं, ये क्या बात है? अबीस नहीं मतलब I don't know what Spina di Rosula was like in the past, but I know it's a great organization now. With Navia around, we're not worried about this place's future. We're gathered here today to tell our boss that we support you and believe in you wholeheartedly. यार क्या बात है यार. I believe everyone is here for you, not the glory days. That's what we believe as well. चलो cheer up हो जा नाविया अभी. We'll also always believe in the bond between us. Thank you so much, everyone. Then I'll be brave and just accept everyone's support for what it is. Yes. This really is quite the surprise. I never thought that I'd have the chance to stand next to my mother. Not even in my wildest dreams. यार क्या क्वेस्ट थी, मजा आ गया मेरे को. ऐसी स्टोरी के लिए तो गेंशिन फॉलो करते हैं यार हम लोग. नाइस स्टोरी. It seems like I started to question myself a bit too much. I'll pick myself up again and become a more reliable president for all of you. यस, ये हुई Looking ना बात. back on it, I am honestly embarrassed by how I acted earlier. ये इसका स्टोरी क्वेस्ट खत्म 2 ईयर तक नहीं मिलोगे इससे. यार मेरे को क्या, मेरे पास तो है यार नाविया. अबाउट द गिफ्ट फ्रॉम द टाउन पीपल, अबाउट क्लेमेंटाइन, सब बात करेंगे. I'm sure everyone longs for नाइडा, that one नीलू, thing in life शिंचो, that जोंगली seems बेस्ट टीम trivial to बोलूं मैं तो. others, but they themselves can never obtain. To me, that would be a कोको में भी family चलती है, portrait. मतलब जोंगली ना लो और कोको में को ईएम बिल्ड करके डाल दो ना वहाँ पे, तो भी बहुत I've मस्त है. never thought I'd receive a family portrait of my own. Especially not like this. It seems like I'm not such an सुपर ब्लूम unlucky person एंड हाइपर after ब्लूम all. कौन सा अच्छा लगता है तुमको? मेरे पास ना नीलू है नहीं, तो सुपर ब्लूम मैंने यूज नहीं किया, तो अभी के लिए तो हाइपर ब्लूम. It seems like I started to question my... Looking back on it, you know, About Clementine? I thought about it before. Though my mother only wanted me to live a happy life, that's actually a tall order as well. In practice, it's just as hard to achieve my father's expectations for me. Even though my parents had very different personalities, they always हाइपर had a ब्लूम lot बेस्ट of है, respect for स्ट्रॉन्गेस्ट each रिएक्शन. other. ब्लूम भी अच्छा है, The ऐसे बात नहीं Aquabus है, project पर was a ब्लूम ना monumental नीलू के साथ project बहुत ही that अच्छा है. stood to benefit all of Fontaine. It would have been a little close-minded to assess or evaluate it only from the perspective of the clan.
I think that's probably फिर why नाहिदा she नीलू didn't step कोको in याओ to याओ भी mediate अच्छी है, हाँ or वो कर oppose the सकते हैं। building of the lines. अगर याओ याओ ना हो तो ट्रैवलर भी चलता है इसमें। It seems like looking back on it, About I'm asking, do you honestly really see embarrassed me by as your how partner? Oh, whoa. Why'd you have to remind me? Please don't say that again. It's super embarrassing for me. Oh, forget Don't it now. तुम्हारा। Please forget that I ever said anything. Oh, wait. But it'd also be bad if you were to forget it. Okay, but please keep it a secret हाँ between ये us हुई ना from बात। now on. Please don't ever mention it again. यार एज अ फीमेल ट्रैवलर ना ये फ्रेंडशिप थोड़ी सी वो वाली नहीं जाती। अगर ईथर होता ना तो कितनी फ्रेंडशिप ऐसी जाती। इमेजिन कचिंग के साथ जाती, फिर आयाका के साथ जाती, इसके साथ जाती, नाविया के साथ जाती भाई। ऐसे मछली फेंकती है बे, देख रहे हो? फुल मछली फेंकती है बे दूर दूर तक। तुरंत फूट जाते हैं ना वो। हाँ नीलू की अल्ट ऐसे करके जो पुचुक करके मारती है ना मजा आता है देखने में। नीलू बहुत ब्लूम बनाती है क्या? कोई उसको गेम चेंजर बोला है तो कोई बार डांसर कहते हैं। नहीं नहीं, ब्लूम के लिए नीलू अच्छी है, कोई कुछ भी बोले। हाँ नीलू की भी फ्रेंडशिप ऐसी जाती, नाविया जैसी। बता क्या लू? सिंगचो C6, शेंगलिंग C4, नींगवांग C6, गेमिंग C3, बता क्या लू? सिंगचो C6। अच्छा शेंगलिंग C6 है और सिंगचो C4 है। अच्छा वो सीन है। सिंगचो का C4 क्या है? एक्चुअली ये भी अच्छा है। इसका C6 क्या है? पार्टी मेंबर्स रिसीव 15% प्राइवेट डैमेज बोनस। ये तो अच्छा नहीं लगा। इसका तो पता है मेरे को। गामिंग का C3 क्या है? अच्छा उसका तो बढ़ेगा ना कुछ तो। मैं तो बोलता हूँ ना अभी C6 करने का टाइम मिल रहा है तो कर लो यार। शेंगलिंग शिंगचो सोच रहा था। और नीलू करती क्या है? बहुत ब्लूम बनाती है क्या? हाँ बनाती है ना। ब्लूम को ट्रिगर बहुत जल्दी करती है, उसकी ना अलग ही प्ले स्टाइल है थोड़ी, वो देखनी पड़ेगी आपको। रेन कटर द डैमेज डील बाय इंक्रीज बाय 50%। ले सकते हो ये भी ले सकते हो। पर इसकी स्किन बेकार लगी मेरे को, झूठ नहीं बोल रहा, बहुत ही बेकार स्किन है। शैंगलिंग ज्यादातर मैं यूज नहीं करता ना, मेरे को कुछ पता नहीं मेरी शैंगलिंग किधर झूल रही है बताऊं। मेरी शैंगलिंग C2 पे झूल रही है, यूज ही नहीं करता इसको, पता नहीं क्यों, मजा नहीं आता मेरे को। क्या करें अभी? कितना टाइम हुआ? 6 बज गए ना। एक फ्लोर करके जाता हूँ अभी इसका, बाकी के बाद में करेंगे। फालतू तो स्किन है, फ्यूरिना की असिस्टेंट लग रही है। हाँ ना भाई, वैसे लड़की नहीं है लड़का है, फ्यूरिना का असिस्टेंट लग रहा है। हाँ यार पिछली बार भी नहीं हुआ था, पिछली बार तो एग्जाम थी मेरी, इस बार करेंगे यार। क्या आया इस बार अभी इसमें? ये लोग हैं हाइड्रोमिमिक है, ये लोग हैं की क्या ले जाएं? कोई सा भी टीम ले जाऊं? मैं मार के तो आने ही वाला हूँ। हाइपर ब्लूम ले जाओ क्या? और वो हाइड्रोमिमिक है ना बीच में, क्रायो स्लाइम और हाइड्रोमिमिक है, हो जाएगा फिर भी। नीलू बहुत सारे ब्लूम बनाती है एंड एक बार में 4 डेंड्रो बॉम्ब रख सकते हैं तो 5 आते ही फर्स्ट वाला उठ जाता है। वो बस नाम का लड़का है, ये कर लो भाई। अगर मेरे को हाइपर ब्लूम में इसको फेंकना पड़ेगा तो दूसरी टीम में मैं क्या ले जा सकता हूँ? इसको ले जाऊँ, इलान को ले जाऊँ, चौथे को क्या ले जाऊँ? किधर गया तेरा भाई स्वॉर्ड?
कि तेरे को तेरा स्वॉर्ड मिल गया ना भाई। अभी बताओ। Respect must be given to the will of every creature. न्यूविलेट लेगा ना इस बार तो शायद लूंगा। मैं शियोरी को लेना चाहता हूँ पर उसका गेम स्टाइल मैंने देखा नहीं है, तो गेम स्टाइल देखने के बाद मैं सोचूंगा लूँ क्या नहीं। नाविया को ले जाओ क्या? नाविया ट्राई करूँ क्या? नाविया ट्राई करते चलो। नाविया कैसे रहती है? नाविया को ले जाते, छोड़ो ना भाई, इतना क्या सोच रहा हूँ, यही तो है भाई। आ जाओ भाई। नाविया ले जाते बे, नाविया ट्राई करते हैं। नाविया के साथ क्या ले जाए? पर फिशल ले जाते हैं। फिशल, फिशल बैनी, चैंगलिंग आई गेस। बेकार है मत ले। अरे फ्लोर 9 ही तो है, ट्राई तो करना है। अच्छा वो शियोरी बेकार है। जियो कचिंग बना दी शियोरी। भाई कितनी कचिंग बनाएंगे ये लोग? फ्लोर 9 के लिए कौन इतना सोचता है? मैं फ्लोर 9 के लिए नहीं सोच रहा हूँ, मैं नेक्स्ट मतलब आगे के लिए सोच रहा हूँ। पर अभी के लिए ठीक है, कुछ भी ले जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Another test subject. Hold the line. Dissipate. Hey. Let's get down to business. I see everything. Let's rebuild. ऐसे ही गायब हो रहे बेचारे। Just you wait. मेरे दोस्त ने सिंचो से 100k प्लस डैमेज दिया किससे? ई से। हाँ आता है ना वो, वेपराइज से आता है। मेरा एजो C5 हो गया आज, कैसे भाई? ये कैसे हो गया? अरे By royal decree. तो 3 ही लोग हैं। Stand back. Let's look. Boba, get them. Hey, watch out! Attack! Midnight fantastic. Off we go. इतने जल्दी मरते ना, रोटेशन यूज करने का टाइम नहीं मिलता। क्या स्टैंडर्ड से मिला? अच्छा। अरे मेरे को अबे इस बार डीपीएस चेक है ना, मेरे को वो टीम भी यूज करनी थी, राइडन हाइपर कैरी वाली। वो टीम भी ट्राई करूंगा, उससे कि हो पाता है या नहीं हो पाता है क्लियर। शिन्युन मस्त है यार, कुछ भी बोलो। ठीक है भाई, तुम लोग मस्त रखा यार, मेरे को क्या है, मेरे को नहीं चाहिए शिन्युन। मरने पड़ गई है तो इमेजिन 3 हीलर लेके मैं मर जाऊं। इमेजिन, जस्ट इमेजिन। I see everything. Allow me. Our bond is strong. अरे इसमें ये वाले थे? हाँ? ये तो देखा ही नहीं मैंने। इन लोग को मारने में आधा घंटा लग जाएगा मेरे को। By royal decree. Coming at you. I'm going in. Eat this. Out of the frying pan, into the wings of dark. A proper send down from the Spina with love. मेरी अनबिल्ड नाविया भी 95 के दे रही है भाई। बिल्ड करना पड़ेगा नाविया को। मुझे कुकी टीम बता कितने ईएम देना पड़ता है कुकी को? अरे कुकी को तो भाई 800 ईएम भी काफ़ी है, बहुत कम दे रही नाविया। बिल्ड नहीं है ना उसका, वो अपग्रेड नहीं है, अटैक पटैक सब। अरे क्या बोलते हैं उसका, ई और क्यू अल्ट और वो सब। हाँ Rest and rebuild. Shower me with the dissipate.
आंटी जी आप आ गई, वेलकम यार। आपका वेलकम तो ऐसे होगा आज। बाय बाय आंटी जी यार। अच्छा बिल्ड नहीं है, अच्छा है यार। मेरी भी बेकार है, बस 139 देती है। वाह, ये कर लो। और अच्छा, अरे यार यहाँ पे भी पायरो वाले बंदे। मैं क्यों ये टीम लेके आ गया? Midnight Phantasma. Teamwork is dreamwork. Let's light it up. Fire! Well, eat this. This one's got your name on it. क्रिट नहीं मार रही, क्या सीन है? Coming at ya. मर जा भाई। तो टीम बता, हाइपर ब्लूम, कुकी, नाहिडा, शिंचो, नेक्स्ट क्या लूं? कुकी, नाहिडा, येलान है। शिंचो क्यों ले रहे हो? क्या है? नीलू है, येलान है, क्या है? शिंचो क्यों लेता? किधर गया? किधर है? ऑनलाइन बैठा है क्या? ऑनलाइन बैठा है ले भाई। इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। नेवर माइंड। ये लान होती तो शिंचो के लिए। हाँ बात तो है यार। कुकी है, नाहिडा है, कोकोमी भी नहीं है ना। बारबरा ले जा, मैं तो बोलता हूँ। बारबरा, जस्ट किडिंग। न्यूविलेट ट्राई करना है क्या? न्यूविलेट भी ट्राई कर सकते हो। कुकी के साथ कुकी का ई मार के न्यूविलेट से फुल चार्ज अटैक कर सकते हो। नाहिडा ई, इसका ई, कुकी का ई, कुकी का क्यू, फिर न्यूविलेट का चार्ज अटैक। क्या बात है, पर उसमें सिंचो नहीं चलेगा फिर। numerous works that lay out military strategy in a simple and pragmatic way. Those are my favorite. स्पाइरल अबिस रिवॉर्ड्स। ओ ये भी दिखाने लगे क्या ये लोग? बोल रहे रिवॉर्ड तो ले ले, क्लियर कर दिया भाई। लेता हूँ यार। बारबरा तो डीपीएस बनेगी, C5 होगी। मेरी बारबरा C10 पे है। यार और क्या ले जा सकते हैं? मैं क्या ले जाता था पता है? मेरी नाहिडा वाली टीम पे मैं क्या ले जाता था? नाहिडा ले जाता था, राइडन ले जाता था, शिंचो ले जाता था और येलान ले जाता था। और तो भी मेरा काम चल जाता क्योंकि राइडन का डैमेज ही इतना ज़्यादा था। पर तुमको ना अच्छा खासा वो चाहिए, हाइड्रो अप्लायर, जिससे अच्छे खासे कोर्स बने। क्योंकि भाई ये कुकी ना राइडन से ज़्यादा जल्दी जल्दी कोर उड़ाती है, तो उसके ऊपर है फिर। तो बारबरा ट्राई करना। कैसे पता है? नाहिडा, नाहिडा मारना, कुकी का ई क्यू जो भी मारना है मार देना। बारबरा, शिंचो पहले ई मारना, क्यू मारना, फिर बारबरा का ई मार के नॉर्मल अटैक स्पैम करना। कर सकते हो। अब तो शिन्युन भी है, बारबरा को शाओ बना दूंगा। नहीं ये नहीं हो पाएगा। उसका चार्ज अटैक ज़्यादा नहीं डैमेज देता। अल्लाह सॉरी, प्लंजिंग अटैक। अरे शिंचो का अल्ट भी तो अच्छा हाइड्रो अप्लाई होता है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि शिंचो ई क्यू मार के बारबरा का नॉर्मल अटैक ई मार के ऐसे ऐसे, तो बारबरा का नॉर्मल अटैक मारोगे उससे हाइड्रो अप्लाई होगा और बारबरा हील भी करेगी और वो भी शिंचो की अल्ट भी लगेगी।
हमारा काम हो जाएगा। दो हीलर भी हो जाएगी टीम में, शिनोबू और बारबरा। बारबरा को ईएम बिल्ड करना, ये देखो मैंने इसको ईएम बिल्ड करा है ना ऐसे। ये क्या मछली फेंकती है पर चढ़ बे। वो वहां पे खड़ा खड़ा तालियां बजा रहा है पागल, देखा क्या उसको? तो बारबरा को ईएम देना पड़ेगा ना। हाँ ईएम देना पड़ेगा। मैंने अभी यही किया हुआ है ना, इसको ईएम दिया है, इसको इसका ईएम मैंने हटा दिया, इसका थोड़ा सा डीपीएस कर दिया है और इसको ईएम दे दिया है, और ये तो वैसी की वैसी ही है। What should I try this time? सिंचो से ना ये लान जल्दी जल्दी लगाती है हाइड्रो, उसका अल्ट जल्दी पड़ता है। सिंचो का तो यार वो स्वॉर्ड अब आती है, लगाती है, मारता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। पर हाँ उसके आजू बाजू जो स्वॉर्ड घूमती रहती है ना, उससे पायरो अरे सॉरी हाइड्रो अप्लाई हो जाता है। याओ याओ बारबरा दोनों में से कुछ भी देख लूंगा। हाँ कर सकते हो। डेंड्रो तो आई थिंक नाहिडा सफिशिएंट अप्लाई कर देगी, तो दूसरे डेंड्रो की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्या ही करोगे अगर डेंड्रो लगाओगे और कोर्स ही नहीं बनेंगे, तो समझ रहे हो। अरे बर्जन टीम बनाने का मैंने ट्राई किया था पता है। ये देखो होमा C6, इसको सब ड्रैगन बिन पकड़ा के सब इसका EMBM बिल्ड बनाया था मैंने, उसका फिर बिल्ड मैंने इसको दे दिया। पर मजा नहीं आया मेरे को थोमा से, वो खुद को इतना डैमेज पड़ रहा था बेचारे को। थोमा का भी 100 के देखा मैं। हाँ वो प्रॉपरली खेलते हैं ना तभी होता है, पर अभी से मेरे को मार इतनी पड़ती है ना, मैं प्रॉपरली देख के खेल नहीं पाता। ये हो जाता है। अभी तो शेनहा का भी थोड़ा सा सीन करना है मेरे को ठीक। Respect must be given Skill to the issues बोल will सकते of हैं यार। every creature. Each fish in the ocean swims in its own direction. ओके तो आई थिंक इतना ही रखते हैं भाई आज के स्ट्रीम के लिए। कल मिलते हैं, इवेंट करेंगे, थोड़ा सा टाइम बचेगा तो और अभी से आगे करेंगे। ओके देन आई गेस दैट शुड बी इट फॉर टुडेस स्ट्रीम। होपफुली गाइस एंजॉयड द स्ट्रीम। अगर आपको स्ट्रीम में मजा आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारी गेंशिन इंपैक्ट की मजेदार सी स्ट्रीम। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, गुड नाइट, सी यू सून। स्ट्रीम करे तो कोई मेंबरशिप ले, बात है यार, पर एग्जाम है यार क्या करूं। मंथ में 4 ही करता है। मार्च 20 ठीक है, 20 मार्च के बाद घूमने जाऊँ तो बात अलग है, पर उसके बाद रेगुलर आ रहा हूँ। इस साल पिछले साल से ज़्यादा स्ट्रीम करूँगा 100%। ठीक है मिलते कल, बाय बाय रौनक, बाय बाय लाइट, बाय बाय बाय।